तस्मै श्री मुखं करोति जालं पाण्डुरङ्गे कृपातमहं शीघ्रं दीनतारिणं परमानन्दं नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीविजय पताका स्वामिनां नमाचर्वदां कृपाप्रदाय गौरवं दामोदराय हरे कृष्ण. So with the mercy of Guru and Krishna, we are in the 10th canto, chapter number 4. Hare Krishna. Devan, summary, make it fast. Let him read it first. Start. Chapter 4, The Atrocities of King Kamsa. This chapter describes how Kamsa, following the advice of his demonic friends, considered the persecution of small children to be very diplomatic. Okay. Continue. After Vasudeva bound himself with iron shackles as before, all the doors of the prison house closed by the influence of Yogamaya, who then began crying as a newborn child. This crying awakened the doorkeepers, who immediately informed Kamsa that a child had been born to Devaki. Upon hearing this news, Kamsa appeared with great force in the maternity room, and in spite of Devaki's pleas that the child be saved, the demon forcibly snatched the child from Devaki's hands and dashed the child against a rock. Unfortunately for Kamsa, however, the newborn child slipped away from his hands, rose above his head, and appeared as the eight-armed form of Durga. Durga then told Kamsa, "The enemy you contemplate has taken birth somewhere else. Therefore, your plan to persecute all the children will prove futile." According to the prophecy, the eighth child of Devaki would kill Kamsa, and therefore, when Kamsa saw that the eighth child was a female and heard that his so-called enemy had taken birth elsewhere, he was struck with wonder. He decided to release Devaki and Vasudeva, and he admitted before them the wrongness of his atrocities. Falling at the feet of Devaki and Vasudeva, he begged their pardon and tried to convince them that because the events that had taken place were destined to happen, they should not be unhappy for his having killed so many of their children. Devaki and Vasudeva, being naturally very pious, immediately excused Kamsa for his atrocity, and Kamsa, after seeing that his sister and brother-in-law were happy, returned to his home. Continue. After the night passed, however, Kamsa called for his ministers and informed them of all that had happened. The ministers, who were all demons, advised Kamsa that because his enemy had already taken birth somewhere else, all the children born within the past 10 days in the villages within Kamsa's kingdom should be killed. Although the demigods always feared Kamsa, they should not be treated leniently since they were enemies. Kamsa should try his best to uproot their existence. The demoniac ministers further advised that Kamsa and the demons continue their enmity toward Vishnu because Vishnu is the original person among all the demigods. The Brahmanas, the cows, the Vedas, austerity, truthfulness, control of the senses and mind, faithfulness, and mercy are among the different parts of the body of Vishnu, who is the origin of all the demigods, including Lord Brahma and Lord Shiva. Therefore, the ministers advised the demigods, the saintly persons, the cows, and the Brahmanas should be systematically persecuted. Strongly advised in this way by his friends, the demoniac ministers, Kamsa approved of their
instructions and considered it beneficial to be envious of the Brahmanas. Following Kamsa's orders, therefore, the demigods began committing their atrocities all over Brahmani. Hare Krishna. So in chapter 4, atrocities of Kamsa. So Kamsa does all the atrocities. That means he is causing all nuisance and troublesome to the Brahmanas and Sadhus. So because of that, the entire Mathura is in full disturbance. And he has come to know the child has born and he's So Yogamaya is going to make a noise, and what she's going to do now? She's going to do a wonderful thing, displaying her full opulence, and ultimately she will be coming to know Hare Krishna. Okay. So with this, we'll start off. Shishuko Uvacha Bahir Anta Puradvara Sarvaha Purvadat Avrataha sorry Tato Bala Dhvanim Shutva Graha Palaha Samuttitaha. Madhavi, read that word by word translation, everything. Quick. Sri Shukavacha, Sri Shukdev Goswami said, Vahi Antapura Dvaraha, the doors inside and outside the house, Sarvaha, old, Purvavat, like before, Avrataha, closed, Tataha, thereafter, Bala Dhvanim, the crying of the newborn child, Shukva, hearing, Graha Palaha, all the inhabitants of the house, especially the doormat, Samutitaha, our king. Translation. My dear King Parishit, the doors inside and outside the house closed as before. Thereafter, the inhabitants of the house, especially the watchmen, heard the crying of the newborn child, and thus awakened from daybreak. Purport. The activities of Yoga Maya are distinctly visible in this chapter, in which Devaki and Vasudeva excuse Kamsa for his many devious atrocious activities, and Kamsa becomes repentant and falls at their feet. Before the awakening of the watchman and the others in the prison house, many other things happened. Krishna was born and transferred to the home of Yashoda in Gokula. The strong doors opened and again closed, and Vasudeva resumed his former condition of being shackled. The watchmen, however, could not understand all this. This awakened only when they heard the crying of the newborn child, Yogamaya. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur has remarked that the watchmen were just like dogs. At night, the dogs in the street act like watchmen. If one dog barks, many other dogs immediately follow it by barking. Although the street dogs are not appointed by anyone to act as watchmen, they think they are responsible for protecting the neighborhood. And as soon as someone unknown enters it, they all begin to bark. Both Yogamaya and Mahamaya act in all material accidents. Prakriti Priyamana Niguna Karmani Sarvashaha. But although the energy of the Supreme Personality of Godhead acts under the Supreme Lord's direction, Maya Dekshena Prakriti Suyateka Sarachara. Dog-like watchmen such as politicians and diplomats think that they are protecting their neighborhoods from the dangers of the outside world. These are the actions of Maya, but one who surrenders to Krishna is relieved of the protection afforded by the dogs and dog-like guardians of this material world. I tell you, only Prabhupada got that like this. Hare Krishna. So here, Sukadeva Goswami continued. Hey Parikshit Rajan, जैसी बाहर का अंदर का जितना भी दरवाजा है अपने आप बंद हो जाए, फिर वसुदेव को पूरा जितना भी बांध के रखा था और सब कुछ बंदी बना के अपने आप बैठ गया. So suddenly the inhabitants of the house, especially the watchmen, heard the crying of the newborn child and thus awakened from their beds. जो बच्ची योगमाया
प्रकट होगी, तुरंत उन्होंने आवाज कर दिया। करते हुए ये जितना भी वो वॉचमैन थे सब उठ गए। उठने के बाद यहाँ तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं, बहुत सुंदर है। यहाँ सबसे पहला अनुवाद सॉरी तात्पर्य प्रपात के एक्टिविटीज ऑफ योगा माया डिस्टिंक्टली विजिबल इन दिस चैप्टर। डिस्टिंक्टली मतलब उनको भी अनेक शक्तियां उन्हें भगवान ने दिया। See, though she is Vishnu Maya, she has got two potency. One is Yoga Maya, another is Mahamaya. ठीक है। So यहाँ उन दोनों को इतना विशेष शक्ति भगवान ने प्रदान किया है, इसके वजह से उन्होंने क्या करती थी, पूरा विश्व को अपना वश में रखती है। So then we can understand the different activities, and Kamsa became repentant and falls at their feet. Right? So what does he do now? In which Devaki and Vasudeva excuse Kamsa for his various many devious, atrocious activities. And Kamsa become repentant. ये कैसे हो सकता है? तो कभी भी माफी मांगेगा क्या? नहीं. He will never ever do that. Arrogancy. So what happened before the awakening of the watchman, the other prison house, many other things happened. What are they? वसुदेव ने भगवान को लेकर गोकुल में छोड़ दिया, वहां से योग माया को लेकर इधर रख दिया, फिर अपने आप उनका जो भी बंदी था सब बंद हो गया. So at that time nobody could understand what happened, because again the Maya has done the role. All the watchmen are sleeping, all the doors were opening, all the doors were closing, and all the shackles are breaking, and all the shackles are joining. So everything happened by the role of Maya. This is called distinctively visible activity. Then Vishwanath Chakravarti Thakur jo kehte, that's very interesting. What does he say? The watchmen were just like dogs. Why? Because generally, Prabhupada writes, I remember Kerala, there was a big problem, especially in Palakkad, I think so. Sometime back, many years, there were too many dogs. Even Thiruvananthapuram, I don't remember, 2 places I think so. And the street, they called it stray dogs. The stray dogs were numerous, and people were in deep trouble. One day, one lady was bitten, and so many dogs also bit her and bit her to death on the spot. I think so. One incident happened. How many years before? I don't remember. At that time, I went to Palakkad for some other seva. Same way, I was staying on devotees house, that is Gita's students' parents. So it was night time, we have to go and catch another bus to Tamil Nadu somewhere. When we came out of the house, you will not believe it, that Prabhu, he had 2 sticks in his hand, long sticks. I asked him, why this sticks? No, you watch, no, how this dog. The moment we both walked, no, all the dogs were barking, coming closer. Then he was using that and beating it, all they were running. Till the bus stop. Even at the bus stop, when we were waiting, we were a little worried if anything happened. Fortunately, nothing happened. Then his wife was having a torchlight, and from a distance, one dog was also working. Why I'm telling here, Vishwanath Chakravarti Thakur, he example. The watchmen are behaving like just like dogs, right? And many of the dogs immediately followed back. It's quite natural. So all these are street dogs. Actually, they don't know any owner, right? Whatever the houses they throw, no, that eat it, that's okay. But they think they are the watchmen for the entire street, and they are the owners. So like that, here he is writing, by anyone to act as watchman, they think they are responsible for protecting the neighborhood. And as soon as someone enters it, they all begin to bark. Both Yogamaya and Mahamaya act in all material activities, Prakriti Kriyamanani, Gunai Karmani Shavasaha. But although the energy of the Supreme Personality of Godhead acts under under the supreme direction of the Lord, Mayadhyakshana Prakritihi. Dogs like watchmen, such as politicians and diplomats, Hare Krishna. I hope so. Okay. Because the wire is fully connected.
Careful, careful. Yeah. Yeah, enough, I think so. Enough. So dog-like watchmen, such as politicians and diplomats, think that they are protecting their neighborhoods from the dangers of the outside world. So these are the actions of Maya, but one who surrenders to Krishna is relieved of the protection afforded by dogs and dog-like guardians of this material world. So अंत में क्या सिद्धांत है यहाँ वही बता रहे हैं. But one who surrenders to Krishna is relieved of the protection offered by the dogs and the dog-like guardians of this material world. मतलब क्या है? या इसी कुत्ता और कुत्ते के जैसे और वॉचमैन का सुरक्षा जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग किसका सुरक्षा ले लिया? भगवान का सुरक्षा ले लिया. English. So now we can understand how important is surrendering to the Lord. One need not worry about it. Hare Krishna. So moving on to shloka number 2. Tetu turnam upavrajya devakya garbha janma tate achakshur bhoja rajaya yat udvignaha pratikshate. Okay. So Dhanishta Mataji, Shabdat. शब्दार्थ का शिला प्रभुपाद. जय शिला प्रभुपाद. एक, वे सारे द्वारपाल. टू, निसंदेह. तूर्णम, शीघ्र. उपव्रज्य, राजा के समक्ष जाकर. देवक्या, देवकी का गर्भ जन्म, गर्भ से बाहर आना. तत्, उस शिशु. आचख्यु, प्रस्तुत किया. भोजराज कंस को. यत्, जिससे. उद्विग्न, अत्यधिक चिंतित. प्रतीक्षा कर रहा था. शिशु जन्म की. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Read the translation. After all the watchman very quickly approached King Kamsa, the ruler of the Bhoja dynasty, and submitted the news of the birth of Devaki's child. Kamsa, who had awaited this news very anxiously, immediately took action. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Kamsa was very anxiously waiting because of the prophecy that the eighth child of Devaki would kill him. This time, naturally, he was awake and waiting, and when the watchman approached him, he immediately took action to kill the child. Hare Krishna. So in this verse, what happened now? It is mentioned here. Thereafter, all the watchmen were quickly approaching. The ruler immediately start going to attack, because it's the eighth child. He is waiting for it, and he was waiting all these years also. So finally, he is going to take an immediate action. Satalpate turnam uttaya kaloyam iti vihvalaha Shuti graham agaturnam prasakkalan mukta murdajaha. Okay. Mataji, you read that word by word, synonyms, everything. Yeah. Sir, he, the king comes up, Talpat, from the bed. Turna, wake quickly. Uttaya, getting up. Kalayam, here is my death, the supreme time. Iti, in this way. Vikvala, overwhelmed. Sutigraham, to the maternity home. Agat, went. Turna, without delay. Praskalan, scattering. Mukta, had become open. Murdaja, the hair on the head. Translation. Louder. Translation by Kamsa immediately got up from the bed, thinking, here is Kala, the supreme time factor, which has taken birth to kill me. Thus overwhelmed Kamsa, his hair scattered on his head, at once approached the place where the child had been born. Hare Krishna. Purport. Ahladini Mataji.
कालः शब्द महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये बालक कंस का वध करने के लिए उत्पन्न हुआ था, किंतु कंस ने सोचा कि इस बालक का वध करने का यह उपयुक्त समय है जिससे स्वयं उसका जीवन बच जाए। वास्तव में काल भगवान का दूसरा नाम है जब वे वध करने के उद्देश्य से प्रकट होते हैं। जब अर्जुन ने विराट रूप कृष्ण से पूछा आप कौन हैं, तो भगवान ने कहा मैं साक्षात काल हूँ। प्रकृति का नियम है कि जब अवांछित रीति से जनसंख्या में वृद्धि होती है तो काल प्रकट होता है, और भगवान की ऐसी व्यवस्था बनी है कि लोग बड़ी संख्या में युद्ध, महामारी, दुर्भिक्ष इत्यादि नाना कारणों से मारे जाते हैं। उस समय नास्तिक राजनीतिक नेता भी गिरिजाघर, मस्जिद या मंदिर जाकर ईश्वर से कृपा मांगते हैं, किंतु इसके पूर्व वे भगवान को या उनकी इच्छा को जानने का कोई प्रयास नहीं करते। काल के प्रकट होने पर ही वे कृपा मांगते हैं। मृत्यु परम काल अर्थात भगवान का दूसरा गुण है। मृत्यु के समय नास्तिक को काल के समक्ष घुटने टेकने पड़ते हैं और तब भगवान उनकी सारी संपत्ति हर लेते हैं। मृत्यु सर्व हराशाह और उसे दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देते हैं तथा देहांतर प्राप्ति। नास्तिक लोग इसे नहीं जानते और यदि जानते भी हैं तो उपेक्षा करते हैं, जिससे वे अपना सामान्य जीवन बिता सकें। कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन्हें सिखलाने का प्रयास कर रहा है कि भले ही वे कुछ वर्षों तक महान रक्षक या प्रहरी बने रहे, किंतु काल के प्रकट होते ही उन्हें दूसरा शरीर धारण करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। इसे ना जानने के कारण वे प्रहरी बनकर अपना समय व्यर्थ गवाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करने के प्रयास नहीं करते। स्पष्ट कहा गया है अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य को जन्म मृत्यु में भटकते रहना पड़ता है और इसका पता नहीं चल पाता कि अगले जन्म में क्या होगा। हरे कृष्णा। ये श्लोक में कालोयम, अयम, अयम मतलब मैं हूं, काला मैं काल हूं। So we can understand even in the Bhagavad Gita, when Arjun was looking at the Lord, he was surprised, astonished when he showed all the different expansions. Finally, he asked, "Who are you then?" Then he said, "I am the Kala." Huh? 11.32. Good. Say the sloka. Shri Bhagavan Uvacha Kaloshmi Lokakya Kuta. Good. Okay, that much you remember. So Kalosmi. So one should understand Krishna acts as Kala also. Why? Because everything should get over. Why? Whatever created should be finished. Right? One time I'll tell you, it's a very interesting explanation by a meat eater in our office. He was telling, "Sir, you are telling don't eat meat. Then the goat will numbers increase and the cows numbers will increase and the whatever it is, no, it will increase. Then the population is." I asked him, "Your population, man population is increasing. Who is eating?" He could not answer. Immediately he kept quiet. So such a foolish thinking. They are trying to reduce the population by eating it. This is what I tell you, atheism, total atheism. They don't believe in it. Horrible fellows. So for such persons, the Lord comes as Kala. How? He never comes directly. Again, he has got, that's what the Lord expands to perform so many things. But one cannot understand easily. So when he comes as Kala, nobody can stop. Have you ever seen, oh, somebody stopped? Tell me. No other occasion. Nowhere. So one should understand the only protection from the Kala is what? The only protection from the Kala. It's only Lord. So that's why he says, Rakhe Krishna. So in case of Hiranyakashipu, the Lord fixed his mind to finish, right? So he tried all his protection, right? Anything happened? No. So when the Kala comes again, that is the final. In this case, there is a story olden times written. Generally, the Rajas and the Prajas have good understanding in olden days, right? Nowadays, there is no Raja and there is no Praja also.
Prabhupada writes in many of the cases, all prajas are, he is telling, all ignorant fools, he says that. So this way, that Raja was thinking, I have to have next generation for me. So he begot a child, that being a male child. Then the child was born, then he called the Prohit, he called us astrologer also. The samskara, what do you say? The ceremony, purification ceremony. In the purification ceremony, the astrologer said, your son has got short life. When he heard that, the king was shocked. He said, I will not allow this. Like a atheist king. Then he said, astrologer, I think you are wrongly calculating. Check it properly. Then he said, again the same thing. Then he had his own doubts. He called another astrologer. He also checked. He said the same thing. Then Raja said, no, I will not allow this. He said so and so date, so and so time, everything he mentioned. At the age of this age, the prince will be dying. So he made all arrangements. The child was born, everything taken care, everything was going on smooth. Then he was reminded, oh, the age has come and the time has come. Now I have to give full protection for him. So what did he do now? He brought the prince in a room. Fully all around different type of soldiers, this, that, everything is there. Nobody can enter. And he tells all his ministers, even an ant should not enter. Like that he is talking. And he made all the arrangements. So the Raja, prince son, was staying in the room. In that room, there was a table and the prince was sitting on the chair, right? So the king was getting anxiety again and again as the date came closer, and the date came, and the time what was mentioned by the astrologer also coming closer. Then he said, all over. So be alert, don't be sleepy. Like this, no? Be alert, catch them, right? Now, anything else. So he told all the borders, somebody else, somewhere else, they may come and attack you. So protect all them. So he did all the arrangements. The time has come. The boy is sitting. Interestingly, that time came, the boy died. Imagine, there is all the protection, everything, but the boy died. When the boy died, he screamed. Immediately, all the soldiers, everybody started rushing to the king. Oh, king, your son has died. No, 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 like that he is banging them. Then when he comes and sees, he could not believe it. In spite of all the protection arrangement, everything, how the son died, he could not believe it. Again and again, he is watching. Whatever, no, in the room where he was sitting, in the wall, there was a bull's wooden block. In olden days, no, they used to keep it, right? Only the face with the horn, everything, right? So the wooden bull's face, it has fallen down from the wall and fell on the boy exactly. The boy is finished. And he repeatedly looks at it, he could not believe it. I made all the arrangement, but this has fallen. And he cries out. Now understood, the time is something not in our hands. Similarly, if you look at time again, as we see that, Kalaha Kalayatamaham Bhagavad Gita, he says. When it's so, see, whatever in this material world, what is produced, what is created, has to die. It has to be destroyed. So this way, one should understand, right from a grain which is sown into the earth, right? It grows, right? It's a produce, right? So after it produce, what happened? The farmer breaks it and brings all the rice, wheat, whatever it is, right? It reaches to the shop, then it reaches the home, then it is washed, and mother cooks it, and we eat it. And the time is over. Clear? That is produced.
like that, if you go to a supermarket, what do they say? Expiry. So the expiry is there for all. There is no exception for this. So this is called constant annihilation. What is it called as? Constant annihilation. So the material world is like that. That's why Krishna says Ashashvatam. There is a Shashvatam, but there is a duration. Until then, it is Shashvat. Then the expiry comes. So this way, here Kansa was thinking he can protect himself by killing this child. Okay. So moving on to the purport. Purport, somebody has read it already, right? Huh? Mataji finished everything. Yeah. So it is explained here. Kala appears, they say God willing. What do they say? God willing. Yeah, finish. Hindi, Mataji. So, at the time of death, the atheist must submit to his supreme. At that time, what happened? Even an atheist, I saw just now the king. Same way, there are so many atheists. But what they will use the word? God willing. Then also they will not accept the Supreme Lord. So this is the atheistic philosophy, and it is very difficult for them. So for them, the Lord comes as Mrityuhu Sarvaharascha. Sarva means all, whatever is produced has to be killed. Then again, another thing, the continuation of this philosophy is, whatever is died has to take a birth again. Similarly, as I told you, whatever we ate the grains, no, it comes out in a different form. Again, it goes into the earth. Clear? It goes as urea or whatever it is. Then again, it comes as a grain, everything grows. Is it clear to you? So that means it is a cycle. It will never stop. So whatever is produced will be again created and again annihilated. Similarly, for us, what does it say? Tata dehantara prapti. So one way we took one form of a body, and we don't know what is the next form of the body. Like that, it goes on and on. So that means in the entire material world, whatever is created will have a cycle of creation and destruction, or you can call it as Janma Mrityu. So it is a constant one. Okay. So moving on to that further paragraph, it is mentioned here. One should not waste the time. Why? Because time is highly important. So another body is come, not knowing this, they unnecessarily waste time in their occupation of watchdogs, and they do not try to get the mercy of the Lord. So under these circumstances, they never try to get the mercy of the Lord. Right? Aprapya mam nivartante mrityu samsara vartmani. So they get another body, again they have to meet the same thing. So this is a cycle which will never end. Shloka number 4. Tamaha pratharam devi kripana karunam sati sunusheyam tava kalyana sriyamma antamarhasi. Okay. Srinath. Louder. Come and to Kamsa. Aha said, Bradaram, her brother Devi, Bradaram, her brother Devi, mother Devagi, Subhana, ruthlessly, Karunam, piteously, Sadi, the chaste lady, Musayam Tava, child will be your daughter-in-law, the wife of your future son. Kalayana, old auspicious one, Sudayam, a woman, Ma, not, and them to kill, obviously you deserve. Translation Shri Devali helplessly, piteously appealed to Kamsa, by dear brother, all good fortune unto you. Don't kill this girl, she will be a daughter-in-law. Indeed, it is unworthy of you to kill a woman. What does she say? Don't kill, she'll be a daughter. I tell you, you see the first words in the translation. Prabhupada, what does he use? Helplessly and piteously.
because she is in a pitiable condition. Because any mother will never allow to go away their children. This is what the situation. Even in the case of Ramayana also, you know that, right? Dasharatha had a wonderful time with his son. Who is that? Lord Rama. He doesn't want to miss the day. He wants to see him all the time. You will not believe it. When Vishwamitra came and asked him, he bluntly refused. How many of you remember that? The Ramayana, he bluntly refused. No, I cannot give my son. You take Lakshmana, Shatrugna, Bharat, everybody, but not Rama. At that time, there was someone to correct him properly, because he was immensely attached to Lord Rama. Right? Who corrected him at that time? Vasishta said, my dear king, try to understand, Vishwamitra is not a normal rishi. He is very powerful and it may create you more problems. So just allow him to go. With all hesitation, with all the pain in the heart, he allowed him to go. And every now and then, he'll be asking the update of his son. Like WhatsApp, no? When the child goes out, please update, where are you, right? And we chase them also, right? Nowadays, Google is also there. Even a person walks, you can see in the Google. Like that it has become. So like that, Rama, attraction was so much for Dasharath. So he could not stop it. So that's a wonderful example between the father and the son. That is really, I tell you, a spiritual level. In the material world, it will be too much. Because why? Progress in bhakti will be curtailed. No. I asked the question. See, in spiritual side, between Dasharatha and Rama, it is a spiritual level, right? The attachment between Dasharatha and Rama, right? But in material, I said it will be more. The attachment will be more. Attachment is more. Okay. What is the reason? Bodily concern. One. Then what else? Ignorance. So out of ignorance, attachment. Clear? The first level is ignorance, then the attachment. If somebody is not ignorant, then they will understand. So here, Devaki is really in a pathetic condition. And he says, here also, at this stage also, after killing 6 sons of hers, how she addresses, my dear brother. So I tell you, these are the wonderful situations, how it is explained in this Bhāgavata. Then, further, what does she say? What is the next word? All good fortune unto you. Will a sister say like this when they behave, brother? So try to understand, this is something very unique. What does it show from this? First few sentences, what does it display? Devaki is very humble. Humble. That word is not suitable. Not humble. She is very intelligent. She is intelligent. Then Godly qualities. Godly qualities. What do you say? Godly qualities means. When somebody possesses godly quality, what do you call them? If somebody possesses godly qualities, what do you call them? Quick. So much time. Quick. No. Devotee. Right? Right? When you possess divine qualities, you become a devotee. Correct? How do you possess divine quality? Because you are in the midst of devotees. Right? If you are alone, can you possess any divine quality? No way. Only in the satsang you acquire this. What is that? You acquire this divine quality. So here also, it is very well understood. Devaki is a top class. Right? And don't kill this girl and she will be your daughter-in-law. See, आजकल हम लोग बहुत कुछ योजना बनाते हैं, right? योजना तो बन जाता है. Never our plans works out. But here also, Devaki, out of so much of anxiety, she says, she can be your bahu. And it is unworthy of you to kill a woman also. The next word. This is the next message.
It's a very, very philosophical word. That sentence is. It's unworthy of you. What is that? You become unworthy. Why? Because you have killed a girl. So that's why women should be always protected, should not be killed. This is our Sanatana Dharma. But unfortunately, there is no Dharma now. Clear? So moving on to the purport, ask her to read it. Read it. What's her name? I forgot her name. Just now she said. Aradhana. Read that sentence. Train her. Purport by. Kamsa had previously excused Devaki because he thought that the woman should be killed. Should not be killed. Especially when pregnant. But now, by the influence of Maya, he was prepared to kill a woman. Not only a woman, but a small, helpless, newborn child. Devaki wanted to save her brother from this terrible, sinful act. Therefore, she told him, "Don't be so atrocious as to kill a female child. Let there be all good fortune for you. Demons can do anything for their personal benefit, not considering what to Yes, or yes. But Devaki, on the contrary, although safe because she had already given birth to her own son Krishna, was anxious to save the daughter of someone else. This was natural for her. Who can give a wonderful explanation like this? Imagine her own son is safe. She knows that. But the daughter is not her daughter, right? But still, what does she say? No. That means what is again the devotee's qualities? Para Dukha Dukhi. Generally, in the present world, somebody is attacked, all will watch, I'll take video and put it on the YouTube. Right? Now this is the trend. Imagine the quality. So wonderful, so wonderful. So we have understood from this the greatness of Devaki. Draupadi also has the same quality because when her sons were killed, Yeah. she didn't want the tributes of a Whom to be not to be killed? Mataji? Huh? Whom not to be killed? Draupadi. Brahmana, Sutta. Yeah, tell me. Exactly. What did she say? Situation. Droni have also. Huh? Okay. Because Asuttama's mother will be left alone. Same thing. she'll have the same Yeah. suffering as she's Because Arjun dragged this Ashwatthama like a dog on the street with his pasha, right? Because he sent a barn, right? And he tied him and he dragged him like a dog. And on seeing this, instantly Draupadi said, "No, no." She cried out, "Don't do this." And she was asked to give her comments. What to do with this Ashwatthama? Because he has killed all your 5 sons. Everybody gives different dharma, and what Draupadi gives the dharma, something unique. That means she is the most intelligent. And on top of it, she is fully aware of the Shastras. She says, "Oh, my sons have gone. All 5 died, but I have got 5 husbands to protect me." But the poor, who is that? What is her name? Drona's wife. Kripi. Not Droni. Huh? Kripi. Kripi. What does she say? She has got only 1 son. And if he is killed, what will happen to her?
Husband is already gone. This is the lesson. I tell you, there are lots of lessons. Only thing we have to remember all this. Okay. So moving on to the next shloka. Yes. हाँ. प्रभु इसमें आपने पहले जो बोला था ना तात्पर्य में, हाँ. जैसे देवी की माँ ने मना किया अभी, पर प्रीवियस चैप्टर भी देवी की माँ बहुत प्रसन्नता से सबको दे देती थी, तो कैसे हम समझ सकते हैं? Normally she lady they will not allow, like that you mentioned, right? So how we can call? Okay. She was happily giving. Was it mentioned? Yeah. No. But What? there she... No. Prabhu says when all the other children were one by one killed, Devaki gave it happily. That's what you said, no? I don't think so. Was it mentioned anywhere? No. But there she is not requesting. Okay. Here he is requesting now to Kamsa. The first 6 sons, why she is not asking? Clear? Yeah. That is all. But only in this way she is asking. Tell me what is the reason. Because the previous story. What is the previous? The sixth. Yeah. The Marut's. Marichi. Yeah. Listen carefully. I'll tell you. We read the purport wherein Prabhupada writes very clearly. It's all born by Devaki. Imagine that. It's from her Garbha. Right? But she has to give it up for something better. What is that? Krishna. Now she has got the best. Who is that? But now, why she is attached? Just like I said, though it is others, the devotee will not allow. That's what Paradukha. Clear? So moving on to shloka number 5. Bhagavo himsita brataha shishvaha pavakopa maha tvaya dhaiva nishrutena putrikaika pradipyatam. Okay, one more time. I'm going to give it in online. Okay. Hare Krishna. देवादिदेव प्रभु शब्दार्थ पढ़िए, अनुवाद पढ़िए. देवादिदेव. हरे कृष्ण प्रभु. शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा. जय श्रील प्रभुपाद. बहवः अनेक हिंसिताः ईर्ष्यावश मारे गए. भ्रातः हे भाई. शिशवः अनेक शिशु. पावक उपमः तेज और सौंदर्य में अग्नि के समान. त्वया तुम्हारे द्वारा. देव निश्रुतेन भविष्यवाणी से. पुत्रिका कन्या. एका एक. प्रदीयताम तुम मुझे उपहार स्वरूप दे दो. अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा. जय श्रील प्रभुपाद. हे भ्राता, तुम देववश मेरे अनेक सुंदर तथा अग्नि जैसे तेजस्वी शिशुओं को पहले ही मार चुके हो, किंतु कृपा करके इस कन्या को छोड़ दो. इसे उपहार स्वरूप मुझे दे दो. हरे कृष्ण. तात्पर्य प्रणम प्रभु जी. हरे कृष्णा. सॉरी. हरे कृष्णा. जय श्री सोलंकी माता जी. तात्पर्य पढ़िए ना. जय श्री सोलंकी. She is not coming. Okay, लता असवानी माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंड प्रणाम. हाँ पढ़िए. तात्पर्य भाष्य प्रभुपाद. जय प्रभुपाद. यहाँ हम यह देखते हैं कि देवकी ने सर्वप्रथम कंस का ध्यान करके क्रूर कर्मों उसके द्वारा अपने अनेक पुत्रों के द्वारा किए गए वध की ओर दिलाया. इसके बाद वे उससे यह कहकर समझौता करना चाहती थी कि उसने जो भी किया वह उसका दोष न था, अपितु विधाता का रचा था. उसके बाद उन्होंने उससे याचना की कि वह उन्हें इस पुत्री को उपहार के रूप में दे दे. देवकी क्षत्रिय की पुत्री थी, अतः राजनीतिक दांवपेच जानती थी. राजनीतिक
में सफलता प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं। दम, साम, दान तथा कंस की क्रूरता द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए उस पर सीधा आक्षेप करने की दम नीति का देवकी ने पहले आश्रय लिया, किंतु उसके बाद यह कहकर समझौता कर लिया कि उसका दोष नहीं था। उसी के बाद उन्होंने उससे यह वर मांगा। महाभारत के इतिहास से हमें यह पता चलता है कि क्षत्रियों अर्थात शासकों की पत्नियां तथा पुत्रियां राजनीति दांव पे जानती थी, किंतु हम यह भी जानते हैं कि किसी भी स्त्री को मुख्य शासक का पद प्रदान नहीं किया गया। यह मनु संहिता के आदेश के अनुसार है, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि मनु संहिता का भी अब उपहास किया जा रहा है। वैदिक समाज का सदस्य आर्य लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कलयुग की ऐसी स्थिति है। Hare Krishna, Prabhu. So now we can understand. Have you all observed that purport? So wonderful, so wonderful. Children, there's more. Sorry? There's more to the purport. Yes. I know that. I'll complete now. Hare Krishna. So try to understand here. The purport goes like this. What does she say? Here we see Devaki first focused Kamsa's attention on his atrocious activities. Because first he killed so many children, and she's pointing out, you will be unworthy if you kill a girl. And further she says killing so many sons are also condemned here. When she said that, then she wanted to compromise with him by saying whatsoever he had done was not his fault. Then she says it is not your fault, because she comes to a compromise. Because what is the idea behind it? Why she comes to a compromise? Because the eighth child, Krishna, has to be coming. So she was allowing, though it is painful, though he did all atrocities, what she still understood is, okay, let me get my Krishna. That was the goal of it. What is understanding now? To get Krishna, what's the philosophy? And from Devaki, what do you understand the philosophy? To get Krishna, we can forego? Louder. Everything. Say like that, right? Are we all ready like that? Hare Krishna. Are we all ready? We want Krishna and we have to forego so many things. Coffee, tea, garlic, onion, right? What not? Are we all ready? Ready. So this is what Krishna consciousness. Understood? So here Devaki displayed this. Okay. Moving on to that, then she appealed to him to give her daughter as a gift. Why? Because Devaki was the daughter of a Kshatriya. See, I'll tell you, the Kshatriyas are so powerful. You can't imagine that. There is also one Kshatriya, who remembers it? Very powerful Kshatriya. Who is that? One context. Huh? Context. Context is very simple. Powerful Kshatriya woman. Huh? Huh? Powerful in the sense she went in the atrocities, no? By sending Rama to the forest. Who else? Similarly, Hare Krishna, remember that there was also one Brahmana. Who is that? She was a Kshatriya, but she became a Brahmana, and she became so furious. Who is that? Who said that? Who said that? जोर से बोलो. परशुराम का माँ. वो पत्नी किधर है? माता जी थोड़ा डर लगती है गलती. So Parashuram's mother, what is her name? Renuka. Actually, जमदग्नि ये तो ब्राह्मण है, राइट? मगर एक राजा का बेटी को उन्होंने शादी किया. वो कौन है? रेणुका. फिर क्या हो गया? वो क्षत्रिया थी, मगर इधर आने के बाद क्या हो जाती है? ब्राह्मण पत्नी होगी, राइट? मगर कार्तवीर्य अर्जुना ने क्या किया? गाय को चुरा लिया, बहुत कुछ किया, राइट? फिर क्रोधित होकर जब परशुराम नहीं है, उसी वक्त आक्रमण कौन किया? वही कार्तवीर्य अर्जुन किया, राइट? फिर उनके साथ लड़ रही थी कौन?
रेणुका लड़ रही थी इतना तेजी से, वो डर गया, कर्तव्य अर्जुन, वो ये स्त्री को इतना ताकत है. Then he brought back the cows. When she came back, then Jamadagni got angry. Why? You went into their palace and your purity is lost. याद है सबको? भूल गया? याद नहीं आता, किसी को याद नहीं आता. They are all blinking. I can understand that. Then what did he do? He asked his son, chop off your mother's head. Right or not? First he orders other boys, they are all hesitating. But Then Prabhu, for that is different, no? what is that? To chop off, the reason is different, no? What is the reason? He goes for taking the water, filling out Yeah, the but- No. Even this was the reason also. Because she went and fought to that den. For what time? What is it? You say the reason? She goes to the filling the water and comes back. While filling it, she saw some Indra, yeah. They, Indra's Gandharva. effulgence or something. Gandharva. and she gets little. Yeah, that time. Now you are all ready. Yeah? I gave some other reason, you all got ready. See, this is what you have to remember, no? See, why I am trying to connect? Because you will be getting that. So the real reason is, but why I said the topic, no? When she went and fought with Kartavirya, she showed her real chivalrous. So this way, there is a one interesting thing. Here also, Kshatriya women are also equally powerful. So what did she do? In politics, there are different methods of achieving success. The first represent is Dama. The next is coming as Shama. Then comes the Dhana. Then Devaki adopted all these policies of repression by directly asking Kamsa for having cruelly and atrociously killed. Then he compromised. Then she begged for a gift. As we learn from the history of Bhāgavata, Greater India. क्या लिखते हैं? Greater India. So wives and daughters, Kshatriyas, knew the political game, but we never find that a woman was given the post of a chief executive. Prabhupada क्यों लिखता है इधर? बताओ. Because that time I think Indira Gandhi was there. Correct. उसी समय कौन था प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी. ये तो मना है, वर्जित है. हमारा सनातन धर्म में कभी भी नहीं होता है. इसलिए उनका मृत्यु कैसे हुआ? कैसे हुआ? वो उतना क्यों? तमिलनाडु में एक थी ना, उनका कैसे मृत्यु हुआ? लोग बोलेगा वो पावरफुल लेडी. और क्या क्या शब्द उपयोग किया? वेरी बोल्ड लेडी. क्या बोलती है? बोल्ड लेडी. मृत्यु क्या हुआ? राइट? आई टेल यू, हमारा सनातन धर्म में जो लिखा हुआ है वो तो सत्य है. One should take it very clearly. So nowadays people are talking about woman empowerment. That's why yesterday my Guru Maharaj was explaining about the woman empowerment. Very nicely he put it. In that case, the husband should join hands and perform it. Never let the hands of the woman to go up. Because many of us are going to work and the Matajis are doing so much of, right? You can look at all this children's class, kitchen seva, so many things you do it. So Guru Maharaj is explaining all the Prabhus should join hands and take the seva and share it. Then what happens? It is equalized. Correct or not? So this is what, even when you go for preaching, go with wife. That's what yesterday my Guru Maharaj, and he gave a wonderful plan. क्या बताया उन्होंने? अभी आगे आने वाला है 2 महीना विशेष. क्या क्या है? पुरुषोत्तम और दामोदर में. दोनों महीने में उन्होंने बताया एक नया आइडिया. गृहस्थ क्लास. कैसे? गृहस्था क्लास शुरू करो. गो विथ वाइफ्स, डोंट गो अलोन. Everybody should preach with wife. Automatically it becomes a grahastha class. Clear? So automatically you are sharing their workload and equally it is done. Clear? Okay. So moving on to that next one. From the 6 items, there are Sama, Dama, Dana, there are 6 for that. What we call that? Danda. Huh?
Samadhana Beda Danda. That's different. No, that is different. That is different. That is different. This is different. Repression, compromise, gift. This is the way. Okay. So moving on to that. Prabhupada's right. This is in accordance with the injunction of Manu Samhita. Who is that Manu? Which Manu? What is his full name? Manu. What is his full name? Why you are all blinking? Swayambhuva Manu. What is that? Swayambhu Manu, he wrote the list, do's and don'ts, right? So he made it very clear, the injunctions. That's why it is written here, injunctions of Manu Samhita. But unfortunately, Manu Samhita is now being insulted. What does he say? It is being insulted. It's true. क्योंकि जितना भी लिखा है, क्यों? हमको पालन करने के लिए. शास्त्र में जो लिखा है, सब कुछ इसके लिए. Right? Then what does he say? And the Aryans, the members of the Vedic society, cannot do anything. Such as nature Kali Yuga. Okay. Okay. अभी आगे पढ़ने के लिए ब्रजनारी देवीदासी माता जी पढ़िए माँ. हरे कृष्णा. ब्रजनारी माता. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हाँ पढ़िए माँ. यहाँ से पढ़ रहे हैं ना कि देवकी अच्छी तरह जानती थी. ब्लू वाला हाईलाइट करो ब्रो. हाईलाइट. अच्छा. तस्वे थे तो प्रवेतेत कोविदो न लभ्यते यद ब्रह्मता मूर्थ. Mataji, I will read it, then you wait. तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद ब्रह्मताम् उपरि अधः तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररं हसा. अभी बढ़िए. ये तो श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद में अध्याय 5वां में श्लोका संख्या 18. हाँ पढ़िए. हरे कृष्णा. देवकी अच्छी तरह जानती थी कि उनके अनेक पुत्रों का वध विधि द्वारा निर्दिष्ट या अतः कंस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था. कंस को अच्छी शिक्षा देना भी व्यर्थ था. उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये. चाणक्य पंडित मूर्ख व्यक्ति को अच्छा उपदेश देने पर वह अधिक क्रोध प्रकट करता है. ये नहीं, क्रूर व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है. सांप तथा क्रूर व्यक्ति में दोनों ही क्रूर होते हैं, किंतु क्रूर व्यक्ति अधिक घातक होता है क्योंकि सर्प तो मंत्रों या औषधि से मुक्त किया जा सकता है, किंतु क्रूर व्यक्ति का दमन किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता. कंस का स्वभाव ऐसा ही था. आगे पढ़ने प्रभु जी. बस हो गया. अच्छा. हरे कृष्णा. थैंक यू. पूरा पढ़ लिया आपने तात्पर्य तो. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. सो यहाँ आगे प्रभुपाद क्या बताता है? देवी की सब जानती थी, मतलब एकदम शयानी. राइट. जैसे उन्होंने इतना पुत्र को मार डाला है, तभी उन्होंने उनका विधि, क्या बोलते हैं, प्रोविडेंस. हिंदी में क्या बोलना चाहिए? प्रोविडेंस को हिंदी में क्या बोलता है? विधि का विधान. विधि का विधान. मैं विधि बोल दिया, विधि का विधान. सो उसमें से वो सब चला गया. बट देयर वाज नो नीड टू गिव गुड इंस्ट्रक्शन टू कंसा. अभी अच्छी तरह से कुछ को उसको अच्छा ज्ञान देगा तो प्राप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका ऐसी होता है. उपदेशो ही मूर्खाणाम प्राकोपाय न शांतये. चाणक्य पंडित बताता है, ऐसी मूर्खों को, ऐसी क्रूर को जितना भी आप उपदेश देगा तो क्या हो जाता है, और भी कोपित होता है. कैसे होता है? एक सर्प के जैसे. राइट. इसलिए यहाँ बताता है डेंजरस दैन स्नेक. सबसे बढ़कर ये डेंजरस. आगे क्या लिखता है? ए स्नेक इज एंड ए क्रूअल पर्सन आर बोथ आर सेम. ये क्रूर और एक सर्प दोनों एक ही है. राइट. जितना भी उसको मीठा मीठा शब्द बोलो, मारने वाले हम.
So one has to be very clear on that. क्योंकि यहाँ कंस को जितना भी उपदेश देने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ओके. नन्वहम थे ही अवराजा दीनाहत सुतो प्रभो तातुम अर्हसि मंधाया अंगे माम चरमाम प्रजाम. ओके, ये पढ़ने के लिए निर्मला माता जी पढ़िए. माँ निर्मला माता जी नहीं है, चलेगी. ओके, हाँ पढ़िए. तात्पर्य पढ़ना तो मीनिंग, शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य तीनों. शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य. शिला प्रभुपाद द्वारा. जय शिला प्रभुपाद. ननु किंतु अहम मैं ते तुम्हारी ही निश्चय ही अवरजा छोटी बहन दीना दीन हत सुता संतान से विहीन की गई. प्रभो हे प्रभु दातुम अर्हसी तुम देने में समर्थ हो. मंदयाहा इस अभागिन को, अंग मेरे भाई, इमाम इस चरमाम अंतिम प्रजाम बालक को. अनुवाद. हे प्रभु हे मेरे भाई, मैं अपने सारे बालकों से विरहित होकर अत्यंत दीन हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ. अतएव यह तुम्हारे अनुरूप ही होगा कि तुम इस अंतिम शिशु को मुझे भेंट में दे दो. तात्पर्य. अच्छा, ये अनुवाद में कैसे बता रहा है? माई लॉर्ड, माई ब्रदर, आई एम वेरी पुअर. आगे क्या बता रहा है? हमको अभी बिल्कुल बच्चों नहीं है, इसलिए आप एक काम करिए, मुझे एक बेट दे दीजिए. भाई को एक बहन को हमेशा बेट देना होता है, राइट? यहाँ बेट करके वो दे दीजिए. इट विल बी वर्थी ऑफ यू. पहला क्या बोल रही थी? अनवर्थी, योग्यता नहीं होगा बोलती है. यहाँ योग्यता होगा अगर ये दिएगा तो. So wonderfully, that is, this type of words are very important. How she ask, कैसे बता रहे? ये तो लास्ट है, इसको मुझे बेट करके दे. So when she gives us a gift, she will get it. See, somehow this is what again and again when we read all the chapters, ये कैसे बताता है? एक व्यक्ति को मारने का कभी भी अनुमति नहीं देना, राइट? अगर आजकल देखो रास्ते में, सड़क में कोई 3-4 लोग आता है, एक आदमी को मार डालता है, राइट? उसी समय पब्लिक जाके रोकता है क्या? डरता है. बट हियर इट इज वेरी क्लियरली मेंशन, अगर कोई आके दूसरों को मारेगा तो उसको रोकना एक धर्म है. यू शुड नॉट अलाउ वन टू डाई. दिस इज वेरी क्लियर इन दैट. So this is the essence of this entire chapters. Okay, so moving on to next shloka. Shri Shukovacha upaguhya tamadmajam evam rudatya dinavat yachittam vinirбhatratsya hastat achichide kalaha. हाँ सॉरी, आचिच्छेद. ओके, हाँ राजेश प्रभु. Yeah, read it. Synonym by Srila Prabhupada. Shri Sukha Vacha, Shri Shukdeva Goswami said, Ubagugya, embracing Atmajam, her daughter, Evam, in this way, Rudatya, by Devaki, was crying, Dinavat, very piteously like a poor woman, Ya Shitaha, being begged, Tam, heard, Devaki, Vinir Bharsya, chastising. Vinir Bhartyasya. Vinir Bhartasya, chastising. Hastat, from her hands. Arsi Chide, separated the child by force. Kalaha, Kamsa the most cruel. Translation is Sukdeva Goswami continued, piteously embracing a daughter and crying, Devaki begged Kamsa
for the child. But he was so cruel that he chastised her and forcefully snatched the child from her. थोड़ा scroll कीजिए प्रभु down. Scroll down. Huh. Yeah, snatch the child from her hands. Purport by Srila Prabhupada. Although Devaki was crying like a very poor woman, actually she was not poor, and therefore the word used is Dinavat. She had already given birth. Dinavat. Yeah. She had already given birth to Krishna. Therefore, who could have been richer than she? Even the demigods had come to offer praise to Devaki, but she played the part of a poor, piteously afflicted woman because she wanted to save the daughter of Yashoda. हरे कृष्णा। ये श्लोक संख्या 7 में क्या बता रहा है? सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहा है, किसको? शौनकादि ऋषि को बताता है। पिटियसली एम्ब्रेसिंग हर डॉटर एंड क्राइंग। वो बच्ची को ऐसी आलिंगन करते हुए वो रो रही है। किससे बात कर रही है? अभी कंस को। क्या बोल रही है? देवकी begged Kansa for the child, but he was so cruel that he chastised her and forcibly snatched the child from her hand. तो जोर से चिल्ला रहे और आगे उसका हाथ से खींच कर ले जाते हैं वो नवजोत शिशु को। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, देवकी was crying like a poor, she was not poor. वो तो इतना सर्व संपत्ति उसके पास है। कैसे है? क्या कारण है? भगवान को उन्होंने जन्म दिया। So one should understand, already she has given birth to, therefore she could have been richer than she. उससे बढ़कर जन्म होने के बाद एकदम उन्होंने संपत्ति के साथ, right? I tell you, when we have got so much of wealth, we are telling a person very wealthy, correct or not? Yes. सही है? Yes. Statement सही है? हाँ? 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 We hide it. हाँ। Wealthy we say. हाँ। He's rich man. Rich man ऐसे बोल सकते हैं? असल है? बोलते हैं असल बोलते हैं ना। असल बोलते हैं तो but that is not No. Really it is not. हम लोग बोल सकते हैं, वही सवाल है। क्यों नहीं बोल सकते बताओ? अगर भक्ति नहीं है तो? Materially he is rich, but spiritually zero. So this is what Prabhupada writes here. Because when Krishna came, she has become richer than anybody else. But are we asking the Lord like this? हाँ? जब भी हम लोग प्रार्थना समय पे बोलते हैं ना, श्रीनाथ जी हवेली में, ओ मुझे ये दो वो दो, right? But he never asked for Krishna. Why we become the richest? Tell me, what is the reason? जैसे भगवान आ गया तो क्यों रिचेस्ट हो जाता है? पूरा richness. हाँ? ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य में से उनका एक। ओके, और भगवान को पाने के बाद कुछ और की क्या जरूरत? हाँ? भगवान को पाने के बाद तो कुछ और की जरूरत ही नहीं है। हाँ। यहाँ लिखा है माता जी, यहाँ देवकी एकदम इतना संपत्ति प्राप्त हो गया, राइट? क्योंकि भगवान उनके पास आया, राइट? So why the reason? Why it is said she is the richest? Whatever goes up, it is real. It will remain like this. Ah. Because Huh? Krishna is itself Sun knows. Because who control the word is in. No. आप लोग एक शब्द भूल गया. हाँ. He is the husband of the goddess of fortune. What is it, Prabhu? He is the husband of fortune goddess. Very simple. Saral answer. Good. Hare Krishna. So, moving on to the next shloka. The class also, this boy will always answer like heart training. Perfect, very perfect. He is from Kerala, but his pronunciation, nobody will understand he is a Keralite. Nobody can make out he is a Keralite. So perfection. And mother, father, they cannot pronounce it like him. That's always there. Father is sitting here, mother is there. See, I tell you, certain Atmas are blessed like this. This is very important. Hare Krishna.
तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां सुसुः अपोतय छिल पृष्ठे स्वार्थान् मूलित सौहृदः। हरे कृष्णा। बालकृष्णा प्रभु शब्दार्थ अनुवाद। बालकृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी ने शब्दार्थ भाई श्लाघुपाद जय श्लाघुपाद। तांग शिशु को गृहीत्वा बलपूर्वक लेकर चढ़ायो दोनों पांवों से जात मात्राम नवजात शिशु को स्वयं अपनी बहन की श्रुताम कन्या को अपोथयत पछाड़ दिया। शिला पृष्ठे पत्थर के ऊपर स्व अर्थ उन्मूलित विकट स्वार्थ के वशीभूत होकर जड़ से उखाड़ फेंका। सौहृद सारे मित्र या पारिवारिक संबंध। अनुवाद तात्पर्य श्लाघुपाद। अपने विकट स्वार्थ के कारण अपनी बहन से सारे संबंध तोड़ते हुए घुटनों के बल बैठे कंस ने नवजात शिशु के पांवों को पकड़ा और उसे पत्थर पर पटकना चाहा। So, having uprooted all the relationship, मतलब जितना भी संबंध है मूल से निकाल दिया। उन्मूलन, तापत्र उन्मूलन। यहां उन्होंने क्या किया? रिश्ता को उन्मूलन किया है। क्यों? क्या कारण है? बताओ क्या कारण है? क्यों ऐसे किया उन्होंने? सारी रिश्ता को उन्होंने काट कर दिया। कौन? कंस ने। उनका बहन बोलती है रुको रुको मत मारो, राइट? फिर भी करता। क्यों? 8वां बच्चों को क्या हुआ? इनको मृत्यु किससे होता है? 8वां पुत्र से, राइट? इसलिए उन्होंने क्या सोचा? इसको चढ़ेगा तो हमारा मृत्यु निश्चय। ओके, सो दिस वे Kamsa, who was sitting on his knees, grasped, मतलब इतना जोर से by the legs, उसका दोनों पैर को पकड़ के उन्होंने क्या किया? खींच लिया। and he tries to dash it, मतलब इतना जोर से जैसे हम लोग कपड़े को धोते हैं ना, राइट? उसी समय पत्थर तो आजकल सभी मशीन में हो गया। थोड़ा सा एक्सरसाइज तो अभी आजकल हो भी नहीं है। So immediately what does he do? He banged it against the surface of a stone. Okay. Shadat dastat samutpatya sadyo devi ambaram gata adrishyanutaja vishnoho sayudashta ashta. What is it? Ashta. Ayudhashta. Mahabhuja. Okay. So now it is time for Aniruddh. Synonyms, translation of it. Louder. Sa, that female child. Tat hastat, from the hand of Kamsa. Sam utpatya, slipped upward. Sadhyaha, immediately. Devi, the form of a demigoddess. Ambaram, into the sky. Gata, went. Adrishyata, was seen. Anuja, the younger sister. Vishnu, of the Supreme Personality of Godhead. Sa Ayudha, with weapons. Ashta, 8. Mahabhuja, with mighty arms. Translation also. The child Yogamaya Devi, the younger sister of Lord Vishnu, slipped upward from Kamsa's hands and appeared in the sky as Devi, the goddess Durga, with 8 arms completely equipped with weapons. Kamsa tried to dash. Kamsa tried to dash the child downward against a piece of stone, but since she was Yogamaya, the younger sister of Lord Vishnu, she slipped upwards and assumed the form of a goddess, of the goddess Durga. The word Anuja, meaning the younger sister, is significant when Vishnu or Krishna took birth from Devaki. He must have simultaneously taken birth from Yashoda also. Otherwise, how could a Yogamaya have been Anuja, the Lord's younger sister? Hare Krishna. Thank you. So, Anuja, Ramanuja, right?
Rama Anuja. That's why this Acharya was named as Ramanuja. He is the incarnation of Lakshmana. So here also Anuja means, the meaning is he is the younger sister. So we can understand how the Lord gives her a very special position, right? As Kansa was trying to hit her, जैसे उन्होंने हाथ पकड़ के उनको जोर से मारने के लिए पत्थर में कोशिश कर रहे हैं, तुरंत क्या किया, अपने हाथ से निकल गई. उन्होंने ऐसे उल्टा पकड़ लिया उनको, नवजात शिशु को उल्टा पकड़ लिया, उसको ऐसे मारने के लिए. मगर उन्होंने कैसे निकला, उनके हाथ से निकल कर ऊपर, शी वेंट अपवर्ड्स, ऊपर गया. उन्होंने कौन सा दर्शन दिया, षड्भुज में, अष्टभुज दुर्गा. Right, this is a very interesting thing. Next, Gita. Divya Shragamba Ambaralepe Ratnabharana Bhushita Tanuhustu Shuleshu Sharmasi Shankha Chakra Gadadhara Siddha Charana Gandharvaya Apsaraha Kinnaro Gagahi Upahruttoru Balibihi Stuyamanedam Abravit. Okay. हरे कृष्णा. ये पढ़ने के लिए मैं बुलाता हूँ कमलामुखी माता जी. Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्णा. Synonyms by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Divya Sarka Ambara Alepa. She then assumed the form of a demigoddess, completely decorated with sandalwood pulp, flower garlands, and a nice dress. Ratna Abharana Bhushita, decorated with ornaments of valuable jewels. Danu Shula Ishu Charma Asi, with bow, trident, arrows, shield, and sword. Shankha Chakra Gadadhara, and holding the weapons of Vishnu, conch shell, disc, and club. Siddha Charana Gandharvaihi, by the Siddhas, Charanas, and Gandharvas. Apsara Kinnara Uragaihi, and by the Apsaras, Kinnaras, and Uragas. Upahrita Uru Balibihi, who brought all kinds of presentations to her. Stuyamana, being praised. Idam, these words. Abravit, she said. Shall I read the translation, Prabhu? Yeah. Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The goddess Durga was decorated with flower garlands, smeared with sandalwood pulp, and dressed with excellent garments and ornaments made of valuable jewels. Holding in her hands a bow, a trident, arrows, a shield, a sword, a conch shell, a disc, and a club, and being praised by celestial beings like Apsaras, Kinnaras, Uragas, Siddhas, Charanas, and Gandharvas, who worshipped her with all kinds of presentations. She spoke as follows. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. ये श्लोक में गॉडेस दुर्गा डेकोरेटेड गार्लैंड्स, इतना फूल माला के साथ, शरीर में क्या हुआ, पूरा चंदन लेपन, राइट, और इतना बहुत सुंदरता वस्त्र पहने हुए, आभूषण भी इतना अमूल्य है, और उनका हाथ में bow, trident, arrows, shield, sword, and conch shell, a disc and a club, and being praised by celestial beings like Apsaras, Kinnaras, Uragas, Siddhas, Charanas, Gandharvas, who worshipped her with all kinds of presentation. She spoke. अच्छा, यहाँ ये देवी को हाथ में क्या क्या है आयुध? हरे कृष्णा. शंख, चक्र, गदा. इसमें क्या अभी जितना भक्त लोग हम लोग शिव मंदिर में जाएगा तो दो प्रकार का दुर्गा होता है. कितने लोग ये नोटिस किया होगा पता नहीं है.
एक तो विष्णु दुर्गा और शिव दुर्गा। नोबडी नोटिस, वेरी गुड। हर एक शिव मंदिर में क्या होता है, दो प्रकार का दुर्गा होता है। एक विष्णु दुर्गा लिखा होगा बराबर, उन्होंने ऐसी दिख रही है 8 षटभुज में। हमारे घर का बाजू में एक मंदिर है, शिव मंदिर, मंदिर का नाम है अर्धनारीश्वरा। वो मंदिर में विशेष अल्टर मतलब एक मंडप है, किधर, अष्टभुज दुर्गा। उन्होंने ऐसी इतना आयुध धारण करके दिखा रहे दर्शन। और एक दुर्गा है जिनका हाथ में ये नहीं होगा, क्या, शंख चक्र गदा नहीं होगा, और क्या होगा, जैसे शिव जी करते हैं ना, हाथ में एक हीर और एक और दूसरा कुछ, राइट? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस इट. So she will have similar to that Lord Shiva. Okay, so that is Shiv Durga and Vishnu Durga. यहाँ हम लोग क्या सीख रहे हैं भागवत में, विष्णु दुर्गा। विष्णु दुर्गा का दो प्रकार का, सॉरी विष्णु माया, विष्णु माया का क्या होता है, दो प्रकार का शक्ति होता है, एक तो योग माया और महामाया। यहाँ कौन है, योग माया। योग माया कौन है, विष्णु दुर्गा। समझ में आता है? इट्स इट क्लियर? डोंट गेट कंफ्यूज्ड. So this way all the devatas started worshipping her. Okay, Gita, next shloka. किमया हतया मंद जातः कलौ तवान्त कृत यत्र त्वा पूर्व शत्रु मा हिंसिः कृपणानृता. Okay. Gaurav Sundar, can you read it? Oh, connection is here. Connection. Okay. Okay. Then Shilrani Mataji. Hindi. हाँ पढ़िए माँ, पढ़िए. हाँ पढ़िए. शब्दार्थ अनुवाद दोनों पढ़िए. शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. जय श्रील प्रभुपाद. किम, क्या लाभ, माया मुझे हत्या मारने में, मंद अरे मूर्ख, जातः पहले ही जन्म ले चुका है, खलु निस्संदेह, तव अंतः कृत जो तुम्हारा वध करेगा, यत्न वा अन्यथा कही, पूर्व शत्रु तुम्हारा पहले का शत्रु, माँ मातः मतः हिंसी मारो, कृपणान अन्य बेचारे बालक, वृथा व्यर्थ ही. अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. जय श्री प्रभुपाद. अरे मूर्ख कंस. माता जी थोड़ा जोर से पढ़िए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ, अरे आवाज कम हो रहा है आपका, जोर से पढ़िए. अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. जय श्रील प्रभुपाद. अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, तेरा जन्मजात शत्रु तथा वध करने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अन्यथा कहीं जन्म ले चुका है, अतः तू व्यर्थ ही अन्य बालकों का वध मत कर. हरे कृष्ण प्रभु जी. धन्यवाद. हरे कृष्णा. ये जो माता जी पढ़ी थी, ये हमारा प्रिय लक्ष्मीकांत प्रभु का पत्नी है. ये प्रभु ड्राईडॉक में काम कर रहे हैं. इन्होंने अभी दीक्षा लेने वाला है हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज से. इतना श्रद्धा है इनका और इनका पत्नी को भी. दोनों बहुत साल से हमारा जूम क्लासेस में रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक इंडियन टाइम में होता ना, हमेशा आते दोनों. इनको 2-3 बच्चा है, फिर भी वो माता जी बच्चों के साथ भी क्लास में बैठी, कभी कभी बच्चों भी आवाज करेगी. हरे कृष्णा. जय. सो यहाँ एक श्लोक में क्या बता रहे, हे मूर्ख, क्या बता रही है, यू फूल, व्हाट विल बी द यूज ऑफ किलिंग मी, हमको मार के आपको क्या फायदा होगा. आगे क्या बता रही है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपका शत्रु, कभी से, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ऐसी बोल दिया, बीच में उन्होंने शत्रु नहीं है, शुरू से. आगे क्या बता रहे, आपको निश्चित मारने वाला है. क्या लिखती है,
who will be certainly killing you. Certainly क्यों शब्द उपयोग किया है? भगवान तो निश्चित किया है इनको मारने के लिए. किनको? कंस को. Has already taken place. उन्होंने अवतार ले लिया है और एक जगह पे. Right? Therefore, do not unnecessarily व्यर्थ से और बाकी बच्चों को मारना मत. Such a wonderful thing. Okay, now moving on to the next shloka. इति प्रभास्य तम देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनाम बभूवः. सुनील प्रभु पढ़िए. शब्दार्थ ट्रांसलेशन. हाँ. Hare Krishna. हाँ. हिंदी चाहिए प्रभु. Iti, in this way, Prabhaya, हाँ. addressing Tam, Kamsa Devi, the goddess, Durga Maya, Yog Maya, Bhagavan Afi, Bhagavati, possessing immense power like that of the Supreme Personality of the Godhead, Bhuvi. On the surface of the earth, Bahu Nama, of the different names, Niketeshu, in different places, Bahu Nama, different names, Bahuva, Vikamcha, added. Translation. After speaking to Kamsa in this way, the goddess Durga, Yoga Maya, appeared in different places such as Varanasi and became celebrated by different names such as Annapurna, Durga, Kali and Bhadra. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. So, moving on to the purport, I'll request somebody from the... Okay. रमेश अद्रानी प्रभु इंग्लिश में पढ़िए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. थोड़ा नीचे. हाँ, पर्पट वैश्री थोड़ा नीचे चाहिए. ओके. हाँ. The goddess Durga is celebrated in Calcutta as Kali, in Bombay as Mumba Devi, in Varanasi as Annapurna, in Katak as Bhadrakali, and in Ahmedabad as Bhadra. Thus, in different places, she's known by different names. Her devotees are known as Shaktas, or worshippers of the energy of the Supreme Personality of Godhead, whereas energy of the Supreme Personality of Godhead, whereas worshippers of the Supreme Personality of Godhead himself are called Vaishnavas. Vaishnavas are desired to return home, back to Godhead in the spiritual world, whereas the Shaktas are destined to live within this material world to enjoy different types of material happiness in material world. The living entity must accept different types of bodies. ब्राह्मयम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया. Maya. पढ़ लिया, आप आगे पढ़ लो. According to the living entity's desire, Yoga Maya or Maya, the goddess Durga, gives him a particular type of body which is mentioned as yantra, a machine. But the living entities who are promoted to the spiritual world do not return to the prison house of material body. Tvaktava deham punarjanmam naiti mam iti sorjuna. The words त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. The words Janma, Naiti indicate that these living entities remain in their original spiritual bodies to enjoy the company of the Supreme Personality of Godhead in the transcendental abodes. Vaikuntha and Vrindavana. Vaikuntha and Vrindavana. यहाँ प्रोपाद विशेष विशेष स्थान भूमि में, भूमि मतलब ये भौतिक जगत में क्या क्या नाम पे पुकारता है, कैसे उनको उपासना, देवी उपासका सुनता है ना, उनके क्या क्या बुलाता है, शाक्तः. क्या बोलता है? शाक्तः. जो विष्णु को
आराधना करने वाले को क्या बोलते हैं? वैष्णव। ये शब्द आप लोग नहीं सुना होगा, शाक्त। ओके, तो यहाँ प्रभुपाद वही बता रहे विस्तार से। मगर जो भी अगर शाक्ता बन गया तो यह भौतिक जगत में देवी क्या कर रहे हैं, उनको हमेशा अनेक विविध प्रकार का योनि देखते और देते हुए उनको जितना भी यहाँ भौतिक विषय में आसक्ति है वो भोग करने के लिए देता है। तो वन शुड वर्शिप देवता इफ दे वांट टू, सॉरी देवी, इफ दे वांट टू कम बैक अगेन एंड अगेन। बार बार यहाँ आने का इच्छा है, वो क्या करना चाहिए? देवी को उपासना। राइट? अगर हम लोगों को भगवान को उपासना करेगा तो क्या हो जाता है? वापस नहीं आएगा। इसलिए उनका नाम है मुक्तिदाता। हरे कृष्ण। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। तो वापस आने का जरूरत ही नहीं है। सो नेक्स्ट वन, तया विहितम आकर्ण्य कंसः परमविस्मितः देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रश्रितो अब्रवीत्। ओके, ये पढ़ने के लिए मैं बुलाता हूँ। सौम्या माता जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu. Dandavat पढ़िए। pranam. Okay. Synonyms by His Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Taya, by the goddesses Durga. Abhitam, the word spoken. Akarnya, by hearing. Kamsa, by Kamsa. Parama Vishmitaha, was struck with wonder. Devakim, unto Devaki. Vasudevam cha, and Vasudeva. Vimuchya, releasing immediately. Prashritaha, with great humility. Abravit, spoke as follows. Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. After hearing the words of goddesses Durga, Kamsa was struck with wonder. Thus he approached his sister Devaki and brother-in-law Vasudeva, released them immediately from their shackles, and very humbly spoke as follows. Purport. Kamsa was astonished because the goddesses Durga had become the daughter of Devaki. Since Devaki was a human being, how could the goddesses Durga become her daughter? This was one cause of his astonishment. Also, how is it that the eighth child of Devaki was a female? This also astonished him. Asuras are generally devotees of Mother Durga, Shakti, or of demigods, especially Lord Shiva. The appearance of Durga in her original eight-armed feature, holding various weapons, immediately changed Kamsa's mind about Devaki's being an ordinary human. Devaki must have had some transcendental qualities. Otherwise, why would the goddesses Durga have taken birth from her womb? Under the circumstances, Kamsa, struck with wonder, wanted to compensate for his atrocities against his sister Devaki. Thank you, Prabhu. हो गया माता जी? Yes, Prabhu. हरे कृष्णा, थैंक यू। सो यहाँ देख सकते हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं, हम कंसा तो इतना आश्चर्यचकित देखना पड़ता है। क्यों? देवकी तो मनुष्य है, मगर उन्होंने जन्म दिया है एक देवी को। ये कैसे संभव है भाई? एक तो है, और जो अशरीरी बोली थी क्या, आठवां पुत्र, आठवां गर्भ। मगर आठवां गर्भ बोलेगा तो उन्होंने सोचा है एक पुत्र होगा, मगर ये पुत्री कैसे आ गई? ये सब कुछ उनको इतना आश्चर्यचकित देखना पड़ता है। See, I'll tell you, when the Lord something does it, one cannot understand easily. We will be having n number of questions. इतना हमको शंका आ जाता है मन में, राइट? ये कैसे संभव, वो कैसे संभव। अभी आपको इसके बारे में कुछ विषय बताने के लिए मैं इच्छुक कर रहा हूँ। जैसे हम लोग पांचों
Hare Krishna Prabhu, we can't hear you. हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। ओके, टाइम का, ओके 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 ओके। हाँ, वृंदावना, हाँ वृंदावना, कर 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 पास शुरू कर। हाँ मतलब सब कुछ दे दो, करताल सब कुछ, सब उठ के नाचना। हरे कृष्णा, हाँ स्टार्ट। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare सब लोग जोर से।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है, थोड़ा एडजस्ट करके बैठिए। हाँ, that's why we have removed certain things also. This also you can remove one more thing. निकाल दो ऊपर तक दो, ये पानी का जरूरत नहीं, निकाल दो, इसको भी हटाओ, गिर जाएगा तो पूरा। We need space. Take it up, take it up. Come closer. Hare Krishna. Now you adjust and sit properly. When more devotees come, give space. Okay. Hare Krishna. श्लोका संख्या 15। अहो भगिन यमो यहो भाम मायाभाम भत पाप मना पुरुषाध पुरुषै, actually you should read like this, पुरुषाधैवा पथ्यम बहो हिंसिताः सुताः। Okay, Shyamalani Mataji. Aho alas, Bhagini, my dear sister, aho alas, Rama, my dear brother-in-law, Maya by me, one of you, better indeed. Papmana, because of sinful activities, Purusha Adaha, a Rakshasa man-eater, Eva like, Apkyapyam, child, Ava many, Himshitaha, have been killed, Sutaha, sons. Translation. Alas, my sister, alas, my brother-in-law, I am indeed so sinful that exactly like a man-eater, Rakshasa, who eats his own child, I have killed so many sons born of you. Purport by Srila Prabhupada, Jai Shri हरे कृष्णा। सभी भक्तों थोड़ा पूरा कान खोल के सुनो, ये तात्पर्य तो एकदम महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद इतना विषय समझाता है, आजकल का जो सभ्यता कैसे चलता है, मूर्खता। Rakshasas are understood to be accustomed to eating their own sons, as snakes and many other animals sometimes do. At the present moment in Kali Yuga, Rakshasa fathers and mothers are killing their own children in the womb, and some are even eating the fetus with great relish. Thus, the so-called civilization is gradually advancing by producing Rakshasas. इतना तुरंत खोल के हिम्मत से बोलने वाला और कोई नहीं होगा, एक ही आचार्य है। श्रील प्रभुपाद की जय।
See, this is a pathetic condition. देखिए आजकल ये मनुष्य कैसे बोल सकते हैं, हाँ, जानवर से बेकार है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, जैसी सर्प और कोई मृग तो कभी कभी करते हैं, हमेशा नहीं है, मगर हम तो बहुत करते हैं. So this is totally condemned. इसका पीछे कौन है? सरकार भी है. और सरकार कौन है? एक और असुर है. So this is a situation, and Prabhupada says modern civilization, right? Weekend party, what not, everything all together, it is a demonic nature. मतलब पूरा आश्रित प्रभाव इतना बढ़ते रहते, कम नहीं होते. यही प्रॉब्लम है. आगे देखिएगा तो इतना विषय सब कुछ सुनेगा तो डर लगता है. हम ऐसी परिस्थिति में यहाँ वापस आना है क्या? तो कली का इतना दीर्घ वर्ष है, मगर उसमें वापस नहीं आना चाहिए. इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं इसी जन्म में वापस जाओ भगवत धाम. So one can understand how critical the situation is. हम लोग सोचते हैं यहाँ रहना है, ये करना वो करना, बहुत कोई बोलता है, मगर अंत में क्या है, ऐसे ही परिस्थिति में यहाँ रुकेगा तो क्या होता है, हमारा मन को भी थोड़ा सा जो भक्ति है वो भी चले जाएगा. बिकॉज असुर के बीच में हम लोग को रहना मुश्किल है, राइट? असुर के साथ रहेगा तो और गड़बड़ है. सो वन शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट श्लोक. ओके, शैलेश प्रभु. Synonyms, translation. हिंदी चाहिए तो हिंदी भी है. That person who indeed aham, I, Sapta Karunaya, devoid of all. कारुण्यः, Sapta Janati Sur, my relatives and friends have been rejected by me. Kala, cruel, Kanlokan, which planet? Why indeed? Gamishyami, shall go. Brahma Iva, like the killer of a Brahmana. Mritta Swasan, either after death or while breathing. Being merciless and cruel, I have forsaken all my relatives and friends. Therefore, like a person who has killed a Brahmana, I do not know to which planet I shall go, either after death or while breathing. हरे कृष्णा. यहाँ देख सकते हैं एक मूर्ख है, एक असुर है, राइट? ये इतना इनके अंदर कैसे आध्यात्मिक ज्ञान है, कहां से उत्पन्न हुआ है? इसलिए आगे प्रभुपाद में बताता है आजकल मूर्ख और आजकल असुर को ये भी नहीं है. क्या नहीं है? ये आध्यात्मिक ज्ञान, जितना ज्ञान था 5000 बरस के पहले, अभी वो भी नहीं है. अंडरस्टूड नो? 5000 years before, asuras are having some sort of a spiritual knowledge, but now the asuras are completely bereft of spiritual knowledge. Okay, so one more thing which we want to understand here is, see, by doing so, what have happened? He has completely disconnected all the relations. क्योंकि पाप कार्य करेगा तो क्या करेगा? सब लोग छोड़ के जाएगा, राइट? रिश्तेदार. So here he has done such a merciless killing, and therefore I have killed a Brahmana too. Therefore, like a person who has killed a Brahmana too. So that means it is tantamounts. What is it called as? In English they say tantamounts means resulting in killing a Brahmana. So though he has killed others, but what he has done? Brahmana. Why? Because 5% should be always protected. What are they? Brahmana, child, three children, Gomata. Gomata. So this is what again understood. Shloka number 17. Devamapi andritam vakti na martya eva kevalam yad vishrumbhate aham papaha swasur nihatavan shishun. Okay.
कविता जसवानी, कविता जसवानी नहीं है। ओके, विघ्नेश्वरी। Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण। Synonyms by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Daivam, providence. Api, also. Anritam, lies. Vakti, say. Na, not. Matya, human being. Eva, certainly. Kevalam, only. Yet, Vishrambhat, because of believing that prophecy. Aham, I. Papaha, the most sinful. Shwashuhu, of my sister. Nihatavam, killed. Shishun, so many children. Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Alas, not only human beings, but sometimes even providence lies. And I am so sinful that I believed the omen of providence and killed so many of my sister's children. तो यहाँ क्या कह रहा है? Not only human beings, but also even providence lies. मनुष्य तो झूठ नहीं बोल रहा है, अभी दैव भी बोल रहा है. So I am so sinful, I believe that. ये मैं इतना मूर्खता हूं. मेरा बहन का जितना भी पुत्री को मार डाला है. So moving on to next श्लोक गीता. सोचतं महाभागा आत्मजान स्वभूतं विचकार जानतो न सदैकत्र अत्र दैवादीनास्तदा सते. हरे कृष्णा. श्री कविता माता जी. Synonyms, translations by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Ma Shoshadam. Kindly do not be aggrieved for what happened in the past. Maha Bhagav. Oh, you who are learned and fortunate in spiritual knowledge. Atmajan. For your sons. Swakritam, only because of their own acts. Gujaha, who are suffering. Chandava, all living entities. Na, not. Sada, always. Ektra, in one place. Daiva, Adinaha, who are under the control of providence. Tata, hence. Asate, live. O great souls, your children have suffered their own misfortune. Therefore, please do not lament for them. All living entities are under the control of the Supreme and they cannot always live together. Hare Krishna. Thank you, Mataji. So, वो great soul किसको address कर रहा है? वसुदेव और देवकी को. आगे क्या बता रहा है? Your children have suffered so much of misfortune. सौभाग्यता नहीं है. Therefore, please do not lament. हाँ? कैसे बता रहे? मारने के बाद ये मधुर वचन आता है. And all the living entities are under the control of Supreme. Oh, ये भी है. And they cannot always live together. इसमें तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं. 5000 बरस के पहले कम से कम ये असुर को तो इतना ज्ञान था, आजकल वो भी नहीं. I tell you, Prabhupada talks very precisely and sharply. जितना भी उन्होंने बोलते हैं, अभी एक तलवार से एक केला को 3 भाग कर सकते हैं. केला एक है, एक ही तलवार है, मगर वो केला को 3 भाग करना है. एक ऐसे समझो. एक ही है. हाँ? 1 8 है. हाँ? In 1 8. फिर क्या है? 3 बार करेगा क्या? क्या बोल रहे भाई? ठीक है, अभी थोड़ा चलाओ.
pick. Let me say who is telling correctly the answer. हरे कृष्णा, किसी को उत्तर नहीं मिला, ठीक है। अभी देखिए, तलवार को ऐसे बेंड करो, यू शेप, काटो, क्या हो जाएगा? बेंड करने वाला चाहिए, बेंड करने वाला कोई बेंड वाला नहीं मिला तो बेंड नहीं मिला तो बेंड नहीं कर सकते। नहीं बेंड वाला लेना है, इसलिए 3 टुकड़ा करना है ना, बेंड वाले नहीं, ये बात नहीं है। मैं सवाल पूछे, उत्तर दे रहे। हरे कृष्णा। ओके, so moving on to that, let us try to understand the purport. Purport, somebody has read it now, right? Okay. That's what I'm telling. purport पढ़ने के बाकी है। तो बाकी का सुना नहीं, लास्ट में सुना नहीं। अलर्ट, 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 सावधान। हाँ, अभी अगले कविता भी बड़ी सुनी। वेट। कल्पना, कल्पना, read the purport. हिंदी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु। कल्पना, नो जी, हरे कृष्णा प्रभु। दिशा मोदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दिशा मोदी। Nobody's coming. I don't know what's up. हरे कृष्णा। अपनी बहन तथा बहनोई को मां होगा कहकर संबोधित किया। अच्छा, प्रहलाद का चक्कर में हूँ। क्योंकि यद्यपि वह उनके सामान्य बच्चों का वध कर चुका था, किंतु अब देवी दुर्गा इन दोनों से ऊपर आया था। क्योंकि देवकी ने दुर्गा देवी को अपने गर्भ में ही धारण किया, इसलिए उसने देवकी तथा उसके पति की प्रशंसा की। असुरगण देवी दुर्गा, काली इत्यादि के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं, इसलिए विस्मित कंस ने अपनी बहन तथा बहनोई के उच्च पद की प्रशंसा की। प्रकृति के नियम नहीं, क्योंकि वे ही प्रकृति के नियमों के नियंत्रक है, किंतु सामान्य जीव तो इन्हीं नियमों द्वारा विनियमित होते हैं। क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व। फलस्वरूप हम में से किसी को भी अधिक काल तथा साथ साथ रहने नहीं दिया जाता। कंस इस तरह की बातों से अपने बहन तथा बहनोई को सांत्वना देना चाह रहा था। हरे कृष्णा। यहाँ प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व। मैंने किया, क्या किया? मैंने किया, ड्रामा में मैंने एक्ट किया, हाँ, राइट। मैंने सारी सेवा किया, राइट। ये शब्द सही है? मैंने नहीं किया। हरे कृष्णा। सो यहाँ इतना ही समझा, हाँ, प्रकृति के वजह से हम कार्य करते हैं। मगर कोई क्या बोलेगा, मैं किसी को मार डाला है, वो प्रकृति की वजह से किया, ऐसे भी बोलेगा, राइट। मूर्खता तो I'll tell you, this is what we have to understand. There is a fine line between this. क्या होता है, हर एक जीव तो ये भौतिक जगत में आ गया तो 3 गुण हमेशा उसको पकड़ के रखते हैं। भगवत गीता में भगवान कहता है तीनों साथ में पकड़ेगा तो एकदम खींच लेगा, मगर क्या करता है, ऐसी होता है। अगर सत्वगुण में एक व्यक्ति आ गया तो बाकी दोनों गुण है ना, उसको खींचने के लिए कोशिश करते हैं, राइट। ऐसी कोई तमोगुण में आ गया तो बाकी दोनों खींचता है। अंत में ये व्यक्ति को चारों तरफ से खींच के हट जाता है, तो कुछ नहीं कर सकते। सो व्हाट इज अंडरस्टैंड हियर इज द गुणास ऑलवेज कंट्रोल्स। यहाँ इसलिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, दुर्गा कंट्रोल्स नेचर। वो प्रकृति उसको कभी भी नियंता बन नहीं सकते। जैसे भगवान नियंता है प्रकृति का, प्रकृति भगवान को नियंता बन नहीं सकते। यहाँ भी देवी को भी, और एक शब्द में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा है इक्वल टू कृष्णा, लाइक क्या लिखा था अनुवाद में, भगवान के जैसे उनको भी शक्ति है। क्यों बताओ, उत्तर दे दो तुरंत। भगवान की एनर्जी है। गुड, भगवान से उत्पन्न हुआ है, इसलिए देवी को भी उतना शक्ति प्राप्त है।
So that's why here it is said very clearly, Prakriti Kriyamane. Consequently, none of us are allowed to live together for any period. By speaking like this, Kamsa tried to pacify. I'll tell you, nowadays, हम लोग जो भी कार्य करता है, उसके ऊपर जस्ट इतना डालते रहते हैं, दूसरों को छोड़ता नहीं बात है. माता जी हंस रही है. आफन होता है घर पे. है क्या? हाँ? मैं ऐसे ही. हरे कृष्णा. So try to understand. प्रभु ये आपका घर पे नहीं है. आगे fill up the blanks. So try to understand. Say, I'll tell you, do not mistake it. This is what the nature of human being. They do something and they justify it. Justification के लिए हिंदी में क्या बोलना पड़ेगा? शब्द मुझे. प्रभु समर्थन. सफाई. ये पैसिफाई नहीं है. मैं यही शब्द बोल रहा हूँ. No, I'll tell you. Justify. Whatever we do, we justify. What is the Hindi word? अच्छा, इतना प्रसिद्ध हिंदी लोग है, किसी को शब्द मालूम नहीं. समर्थन प्रभु. हाँ? समर्थन. समर्थन. Yes. नहीं. आप हिंदी एग्जाम में फेल होगी. नहीं प्रभु, justify means समर्थन ऐसे ही मैंने पढ़ा है. हरे कृष्णा. Leave it. Okay. न्याय शब्द सही है. न्याय संस्कृत है. हरे कृष्णा. Okay, moving on to श्लोका number 19. भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्ति अपयान्ति च नायम आत्मा तत्तेषु विपर्येति यतैव भूहु. ओके, ये पढ़ने के लिए मैं यहाँ कोई बैठा हुआ है ना. हाँ, कविता सुपाठ जी. हाँ, क्या हुआ? सामने है ना स्क्रीन में. हिंदी में डाल दिया आपने. पृथ्वी पर भौमानी पृथ्वी से बने सारे भौतिक पदार्थ यथा खड़े आदि भूतानी उत्पन्न यथा जिस तरह यान्ति प्रकट होते हैं उपयान्ति विलीन होते हैं खंडित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं. चा तदा ना नहीं. अधम आत्मा आत्मा या आध्यात्मिक स्वरूप सदा उसी तरह. ये देशु इन सब भौतिक तत्वों से बने पदार्थों में से विदेशु इन सब में से विपर्येति बदल जाता है या टूट जाता है यथा जिस तरह. अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद. जय श्रील प्रभुपाद. इस संसार में हम देखते हैं कि बर्तन खिलौने तथा पृथ्वी के अन्य पदार्थ प्रकट होते हैं, टूटते हैं और फिर पृथ्वी में मिलकर विलुप्त हो जाता है. इसी तरह बद्ध जीवियों के शरीर विनष्ट होते रहते हैं, किंतु पृथ्वी की ही तरह ये जीव अपरिवर्तित रहते हैं और कभी विनष्ट नहीं होते. ना शरीर. हरे कृष्णा. थैंक यू. अभी आगे पढ़ने के लिए मैं बुलाता हूँ ललिता रामस्वामी. Louder. But although Krishna is described as a demon, he had. Mata, you want English or Hindi? Sorry, Prabhu. Sorry, English is fine. Although Kamsa is described as a demon, he had good knowledge of the affairs of Atma Tattva, the truth of the self. 5,000 years ago, there were kings like Kamsa, who was described as an asura, but he was better than modern politicians and diplomats who have no knowledge about Atma Tattva. As stated in the Vedas, Asangohi
I am Purushaha. The spirit soul has no connection with the changes of the material body. The body undergoes 6 changes: birth, growth, subsistence, byproducts, dwindling, and then annihilation. But the soul undergoes no such changes. Even after the annihilation of a particular bodily form, the original source of the bodily elements does not change. The living entity enjoys the material body, which appears and disappears. But the 5 elements, earth, water, fire, air, and ether, remains the same. The example given here is that pots and dolls are produced from the earth, and when broken or destroyed, they mingle with their original ingredients. In any case, the source of supply remains the same. As already discussed, the body is made according to the desires of the soul. The soul desires, and thus the body is formed. Krishna therefore says in Bhagavad Gita 18:61, Ishvaraha sarvabhutanam hrideshu arjuna tishtati brahmayan sarvabhutanam yatrabodhani maya. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. Neither the super soul, Paramatma, nor the individual soul changes its original spiritual identity. The Atma does not undergo birth, death, or changes like the body. Therefore, a Vedic aphorism says, Asangohi Ayam Purusha. Although the soul is conditioned with this material world, he has no connections with the changes of the material body. Hare Krishna. Asangohi Ayam Purusha. So, यहाँ जिन्होंने इतना विस्तार से आध्यात्मिक ज्ञान उपदेश देने के लिए योग्यता बन गया, मतलब यह इसलिए प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में क्या बताया, आजकल जो भी नेता है वो तो इतना भी नहीं है। सो इसका मतलब जैसी भगवत गीता में भगवान समझाता है, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, राइट, और एक नया वस्त्र पहनना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही अनेक श्लोक है, एक श्लोक नहीं, हर एक श्लोक में क्या बताता है, ये जीव तो शाश्वत है और शरीर तो अशाश्वत है। इतना समझाने के बाद भी, मगर ये जितना भी हमको उदाहरण देने के बाद भी हमको ये विषय स्वीकार करना मुश्किल होता है। यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बताता है, जैसी मिट्टी से बना हुआ है अनेक मटका और बहुत कुछ, राइट, मगर क्या होता है बाद में वापस वही मिट्टी में। इसे हमारा शरीर भी पंचभूत से बना हुआ, वापस क्या करना पड़ता है, वही पंचभूत में मिलना चाहिए। कौन किया ऐसी विशेष? दधीची और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को किसने उपदेश दिया? विदुर महाराज, राइट। उन्होंने इतना बोलने के बाद उनको देखिए, ये तो धृतराष्ट्र का क्यों नाम लिया मालूम है? धृतराष्ट्र एक अज्ञानी है, बोल भी सकते, थोड़ा क्रूर है और असुर भी बोल सकते। क्या कारण है? उनका जो साला था ना, एकदम बेस्ट है। आगे बोलने का नहीं, बस इतना ही। क्या होता है, दुस्संग का प्रभाव कितना फैलता है। देख, असल में देखेगा तो धृतराष्ट्र को तो इतना आसक्ति नहीं था राज्य में, राइट, बट स्टिल द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इतना परिवर्तन होता है एक दुस्संग की वजह से। आज कोई पूछ रहे थे हमारा क्लास में, हम लोग ऐसी अभक्त को भी जाके प्रसाद खिला सकते, अभक्त का भी हम भागवत गीता के बारे में बोल सकते क्या? ऐसी कोई सवाल पूछ रही थी, मैं इतना ही बताया। हम कृष्ण भावनामृत में इतना दृढ़ता है, राइट, हम अकेला जाके ऐसी अभक्त का बीच में हम प्रचार करेगा तो दो तो निश्चित होगा, एक तो हम उसको भक्त बन सकते, नहीं तो हम उस तरफ जा सकते। इसमें कौन सा तरफ हम रुकेंगे ये देखना पड़ेगा। सो इट इज नॉट ए इजी थिंग, आई विल टेल यू व्हाई। अभी ऐसे क्यों बताया, क्या कारण बताओ, क्यों ऐसे बताया, किसके बारे में अभी बोलने वाले आगे? इतना नहीं, आप लोग तो एक तो ऊंचे में, अब एकदम ऊंचे। हमारा प्रिय गुरु कौन है? इतना समय बस
वो भी शब्द डाउट से आ जाता। श्रील प्रभुपाद, राइट? समझो इतना श्रेष्ठ महान भक्त है, महात्मा है, राइट? अपना भक्ति तो अच्छा चल रहा है राधा दामोदर मंदिर में, वृंदावन में, वो छोड़ के क्यों पश्चिम जाना? इमेजिन वहां जाके इतना आजू बाजू में जो था पूरा तो मूर्ख है, राइट? मगर क्या हुआ, देखिए इसमें विशेष विषय क्या है, एक शुद्ध भक्त का संगति की वजह से सारी शुद्ध भक्त बन गया। शुरू में वो लोग इनका महिमा मालूम नहीं था, मालूम पड़ गया तो सब लोग दंडवत, सब कुछ प्रभुपाद करने के लिए तैयार है। क्या कारण है? उसका अंदर जो भक्ति का बीज थे, प्रभुपाद जाके उसको पानी पालन पोषण सब कुछ किया, बन गया भक्ति लता बीज। इमेजिन ऑल दिस डिसिप्लिन्स ऑफ प्रभुपाद आर अमेजिंग, अमेजिंग। क्या कारण है? एक शुद्ध भक्त की वजह से। इससे बढ़कर उनका जितना भी शिष्य है उनको पर इतना प्रिय है, इतना प्रिय, कुछ भी करने वाले गुरु के लिए। जैसे हम लोग श्री संप्रदाय में सुना है, वैसे ये भी है। दे आर रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर श्रील प्रभुपाद। जितना भी शिष्य है अपना शरीर के बारे में देखता भी नहीं, क्या चाहिए? मेरा गुरु बोला प्रचार, प्रचार। सो दैट शुड बी द मोड। क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसी गुरु महाराज जाके तो ओ मैं जाके सेवा करूं, सेवा करूं, राइट? शरीर का सेवा एक होता है वकू, मगर उससे बढ़कर और विशेष सेवा क्या है? वाणी। ये वाणी का सेवा हमेशा होता है, ये बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि जितना भी हम एक बार किशोर भानु स्वामी महाराज का लेक्चर सुना था, उसमें उन्होंने बताया क्योंकि सेवन मुखों की जिह्वा था, मतलब सेवा करते वक्त हमारा मन में ये नहीं होना चाहिए ओ मेरे को सेवा मिल गया, मैं इतना सौभाग्यशाली, राइट? मगर इससे बढ़कर और एक विषय याद रखना चाहिए, यहाँ जितना भी सेवा प्राप्त होता है वो सेवा और दूसरों को भी बुला के उसको भी भाग देना चाहिए। ये कौन सा भक्त श्रेष्ठ है? गुड। और श्री वल्लभ प्रभु। हरे कृष्ण। और क्योंकि यही देखिए सेवा सबको बांटना बहुत जरूरी है, ये सीखना चाहिए। आई टेल यू, हमेशा प्रभुपाद क्या करते थे? ओ प्रभु आप जाके ऑस्ट्रेलिया में शुरू करो। ओ मतलब हर एक को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया होगा तो क्या होता है, उनको भयभीत नहीं है, मन में क्या होता है, ओ मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, मैं ठीक से करना। दैट शुड बी द मूड। उसी समय जितना भी आजू बाजू में जो भक्त है उसको भी साथ में लेके जाना, उनको भी मौका देना चाहिए। सो वन शुड बी हैविंग दिस मूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Any Maharaj comes, you have to call around devotees, please come and do something. This should be. So यहाँ Prabhupada वही किया, right? When he started it, he was single-handed. After that, what happened? He was relaxed, बिंदास। क्या हुआ? जितना भी शिष्य है सब प्रभुपाद के लिए करते थे, क्योंकि प्रभुपाद ने उनको क्या किया? एम्पावरमेंट, शक्ति प्रदान की, because they surrendered to Prabhupada. So these are the essence. क्योंकि हम लोग इतना कथा सुनता है, इतना प्रवचन सुनता है, बहुत महाराज को मिलता है, उनको दर्शन मिलने के बाद, उनको अनुभव सुनने के बाद भी ये नहीं सीखेगा तो क्या? So whenever you get opportunity to do seva, try to call out few more, take them along. That's very important. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भगवत गीता अकेले मत पढ़ो, भागवत अकेला मत पढ़ो। मतलब क्या है? ये ज्ञान सबको बांटना है। पता नहीं और दूसरा भी हमसे बढ़कर भक्त होगा, उन्होंने उनका अनुभव बताएगा तो हमको एक शिक्षा प्राप्त होता है। दैट मीन्स द शिक्षा गुरु इज इन्यूमरेबल। क्या लिखता है? असंख्य। एक छोटा बालक अनिरुद्ध भी एक शिक्षा गुरु बन सकते, राइट? So these are the essence in life. So here we have to understand
The spirit soul has no connection with the changes in the body. आत्मा को कभी भी परिवर्तन नहीं है. मगर ये मूर्ख कौन बता रहे? Okay, so moving on to that. आगे देखेगा तो इसमें एक विशेष श्लोक है. सब लोग बैहाट किया दिखता है, इतना जोर से सब लोग पढ़ते हैं, बहुत आनंद है. मगर आंख बंद करके कितना बोलेगा वो देखना पड़ेगा. हाँ, आप तो टीचर है, भक्ति शास्त्री टीचर भी है. और कोई? Who can say this sloka without looking at it? हाँ. ईश्वर सर्वभूतानां उद्देश्य किमतिष्ठति परमं सर्वभूतानि यन्त्रयोगानि मायया. I'll tell you, Rahul observes a lot. He has got good grasping capacity. So we have to understand what is more important is, कल हम लोग सुना था ना महाराज का लेक्चर में, ग्रेव क्या शब्द उपयोग किया? प्रोपाद ग्रेव. और what is his name? कदम्ब कान स्वामी महाराज ग्रेव. मतलब हम लोग दीर्घ अंदर होना चाहिए. We have to be deep in this. बाहर से दिखाने की जरूरत नहीं. राइट. सो यहाँ ये इसमें बताता है, हर एक को तो एक विशेष योनि दिया है. वो योनि को हम लोग ठीक से उपयोग करना, क्योंकि हमारा हृदय में विराजमान है भगवान. मगर हमको क्या करता है, ऐसी मशीन में बिठा के चलाता है. इसका मतलब क्या है? राइट. ऐसी मशीन चलाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी उसको तकलीफ होता है. राइट. कभी ठीक से चलते हैं, कभी तकलीफ होता है. राइट. इसका मतलब क्या है? हाँ, कभी खुशी कभी गम. आगे इसको आगे करो. हाँ, ही सेड राइटली, आगे करो इसको. शरीर तो ठीक से काम करेगा, कुछ समय व्याधि. राइट. दोनों समय पे समान है. दिस इज द अंडरस्टैंडिंग. इसलिए भगवान नाचो करके बोलेगा तो नाचना चाहिए. ओ मेरे को शर्म है. So then he says, suffer means you have to be ready to suffer. One should not feel it. So this is what the Krishna consciousness. So it is not an easy thing. One has to practice it. Okay, moving on to the next sloka. Okay. अभी किसको चांस नहीं मिला? वेंकट गोपी को दिया नहीं ना अभी तक. हाँ हाँ पढ़ो. शब्दार्थ. हाँ. यथा, yes, and evam vidaha of a person who has no knowledge about Atma Tattva and the steadiness of the Atma in his own identity despite the changes of the body. Vedaha, the idea of difference between the body and the self. Yataha, because of which. Atma viparyaha yayaha, the foolish understanding that one is the body. Deha yoga vyoga, and this causes connections and separations among different bodies. Samsutihi, the continuation of conditioned life. Na, not. Nivartate, does stop. Hare Krishna. Suresh. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, you want me to read translation, Prabhu? Definitely. Hare Krishna. Translation by His Grace Prabhupada. One who does not understand the constitutional position of the body and the soul, Atma, becomes too attached to the bodily concept of life. Consequently, because of attachment to the body and its byproducts, he feels affected by union with and separation from his family, society, and nation. As long as this continues, one continues his materialist life. Otherwise, one is liberated. Hare Krishna, Prabhu. Dimandamma. Hare Krishna, Prabhu. Yeah. The word dharma means engage. Purpose. First, one minute, Prabhu. I will wear my spectacles. Yeah. Hare Krishna, Prabhu. Purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. As confirmed in Srimad Bhāgavatam 1.2.6,
सवै पुंसां परो धर्मो तदेति अप्रतीयते ययात्मा सुप्रतीयते. The word dharma means engagement. One who is engaged in the service of the Lord, yato bhaktir adokshaje, without impediment and without cessation, is understood to be situated in his original spiritual status. When one is promoted to this status, one is always happy in transcendental bliss. Otherwise, as long as one is in the bodily concept of life, one must suffer material conditions. Janma mrityu jara vyadi dukkha doshanu darshanam. The body is subjected to its own principles of birth, death, old age, and disease. But one who is situated in spiritual life, yatho bhaktir adokshaje, has no birth, no death, no old age, and no disease. One may argue that we may see a person who is spiritually engaged 24 hours a day but is still suffering from disease. In fact, however, he is neither suffering nor diseased. Otherwise, he could not be engaged 24 hours a day in spiritual activities. The example may be given in this connection Hare Krishna. that sometimes Hare Krishna. What happened? Yeah, I'm reading, Prabhu. Otherwise, he could not be engaged 24 hours a day in spiritual activities. The example may be given in this connection that sometimes dirty foam or garbage is seen floating on the water of the Ganges. This is called Neera Dharma, a function of the water. But one who goes to the Ganges does not mind the foam and dirty things floating in the water. With his hand, he pushes away such nasty things, bathes in the Ganges, and gains the beneficial results. Therefore, one who is one minute. Hare Krishna. Sanatani Vinoda. Yeah. Start. Hare Krishna, I should start from therefore, right? One who is situated in Yeah. Therefore, one who is situated in the spiritual status of life is unaffected by form and garbage or any superficial dirty things. This is confirmed by Srila Rupa Goswami. Iha yasya harer dase karna mansa gira nikilaso api avasteshu jivan muktaha sa uchyate. A person acting in the service of Krishna with his body, mind, and words is a liberated person, even within the material world. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.187. Therefore, one is forbidden to regard the Guru as an ordinary human being. Gurusu Naramatir Narakatisa. The spiritual master or Acharya is always situated in the spiritual status of life. Birth, death, old age, and disease do not affect them. According to the Hari Bhakti Vilasa, therefore, the disappearance of an Acharya, his body is never burned to ashes, for it is a spiritual body. The spiritual body is always unaffected by material conditions. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. देखिए, भौतिक पदार्थ से बना हुआ शरीर पंचभूत बोलते हैं, मगर यही भौतिक विषय को आध्यात्मिक बना सकते हैं. यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में इसके बारे में विस्तार से समझाता है. आगे देखिएगा तो यहाँ श्लोक के अंदर या अनुवाद में, one who does not understand the constitutional position of the body becomes too attached to the bodily concept of life. Consequently, because of attachment, the body products, feels, affects the union, separation from his family, society, nation. As long as this continues, one continues to material life. मतलब जो व्यक्ति जैसी गृहस्थाश्रम में और भौतिक जगत में आसक्ति के साथ रहेगा तो क्या होता है, बारंबार इसमें जन्म मृत्यु चक्कर में आना ही पड़ेगा. मगर जो इसमें से निकला हुआ है
उनको तो क्या होता है, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मगर इससे उत्तम चीज क्या है? सवै पुंसां परो धर्मः, सबसे श्रेष्ठ धर्म वो क्या है? अथो भक्ति, यथो भक्ति अधोक्ष, राइट। मगर ये अधोक्ष जी कौन है? भगवान स्वयं है, राइट। उनका संबंध में आ गया तो क्या होता है, आगे हमको जितना भी भौतिक विषय है सब कुछ आध्यात्मिक बन जाता है। मगर वापस वो भौतिक बन सकते कभी उसका संबंध से निकल गया था, राइट। इसलिए आगे क्या बता रहा है? आहैतुकी सोचो मत। क्यों? क्या होता है, जो भी हम लोग आध्यात्मिक में सेवा करते हैं उसका हमको फल भोगने का योग्यता नहीं है, क्योंकि उसमें आसक्ति नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने शरीर दिया है, राइट, भगवान को सेवा कर रहा, ऐसे ही सोचना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा शरीर से भगवान को सेवा किया, ये सोचेगा तो भी क्या होता है, अज्ञानी है। तो आगे क्या बता रहे? अप्रतिहता, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टेंटली, सदैव। तो सदैव करेगा तो होता है जो पंचभूत है अपने आप आध्यात्मिक बन जाता है। इसलिए गुरु का क्या कहता है, उन्होंने सत्य को देख लिया। कौन सा सत्य को? परम सत्य को देख लिया। इसलिए उनका शरीर भी क्या है, हमारा जैसे न मत्येषु अवमन्यते। कौन सा श्लोक में बताते? इसमें ऐसी हमारा जैसे वो भी एक दिन मरने वाले सोचेगा तो वो भी अपराध है और अज्ञानी है, मूर्ख भी है। सो वन शुड अंडरस्टैंड कॉन्स्टेंटली ये आत्मा, जो व्यक्ति ऐसे करते हैं उनको क्या होता है, ये आत्मा, वो आत्मा को क्या होता है, सुप्रसीदति, प्रसीदति सुप्रसीदति, प्रसीदताम में भगवान सात्वताम पति। क्या बता रहा है? प्रसीदताम में भगवान सात्वताम पति ही। सात्वती बोलेगा तो कौन है? भगवान का श्रेष्ठ भक्त। वो हमेशा क्या रहता है? प्रसन्नता में। कौन सा प्रसन्नता? आध्यात्मिक प्रसन्नता, भौतिक नहीं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ प्रभुपाद ये भी बता रहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु। सो एज वी अंडरस्टैंड दिस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। असली उद्देश्य है मनुष्य का यही है, सवै पुंसां परो। अच्छा, ये स्वधर्म को पालन करेगा तो भी ठीक है क्या? स्वधर्म को अच्छी तरह से पालन कर रहे, वो ठीक है? ठीक नहीं है? हाँ, पक्का? क्यों नहीं है बताओ? ठीक है, उसको क्या करेंगे फिर? स्वधर्म करते करते अगर भगवान की भक्ति में रुचि आए तो फिर तो सही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा। इन्होंने धर्महस्सु अनुष्ठितः पुंसा विश्वक्षेण कथासुयः न उत्पादयत् यदि रतिम शरण्यः। राइट, स्वधर्म तो पालन करना है, मगर स्वधर्म पालन करते हुए उसमें से क्या उत्पन्न होना चाहिए? भक्ति उत्पन्न होना चाहिए। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं? वर्णाश्रम धर्म में उन्होंने विशेष एक शिक्षा दिया है, वो क्या है? देवी वर्णाश्रम। देवी वर्णाश्रम। सिर्फ हम लोग वर्णाश्रम में बराबर रहना ठीक नहीं है, इसलिए क्या बता रहे? आहैतुकी अप्रति, सॉरी नॉट दैट वन, ओके, हट दैट, धर्म न उत्पादित यदि रथियम, भगवान के ऊपर रथी बनना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इसमें यहाँ अच्छा एक उदाहरण भी देता है, जैसे हम लोग नदियों में स्नान करने के लिए जाते हैं, पुण्य नदी अनेक है, राइट। पुण्य नदी के ऊपर ऐसे बैठती आती है, बहुत कुछ गंदे भी आता है, राइट। कितने लोगों को मालूम नहीं है, जैसे ही डैम खोल गया तो नहीं, ये तो कभी कभी ऐसी पहाड़ से निकल के आते हैं, कभी भी वो गंदे को भी लेके आता है, राइट। झाड़, वो जितना वो राटन वगैरह सब कुछ आ जाता है, राइट। मगर उसी समय हम लोग क्या करते हैं, स्नान करते हुए, ओ ये गंदा है मैं निकलूंगा, ऐसे करते हैं नहीं। क्या करना है, उसको दूर करके फिर स्नान। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डू इट, हाउ मेनी हैव डन दिस, हाउ टू डू अ स्नान। नदी में कैसे स्नान करना है, एक तरीका भी होता है।
मैं बहुत बार बोल चुका है, किसी को याद होगा तो। सुना है प्रभु की क्लास में। हाँ, नदी में पैर नहीं रखने का, पहले पानी अपने शरीर में डाल के बाद में तो ऐसी दोनों हाथ से करके फिर स्नान करना। स्नान करने के लिए भी उसी दिन एक महाराज बताया, और कैसे बताया, कभी कभी क्या करता है कोई के अपना वो लोटा को लेके आता है उसमें से दैट इज नॉट द वे। समुद्र में भी ऐसे लोग हैं। So one should be no, see, can't say that because certain people have fear with the water. Huh? So we can understand नदियों का महत्व यहाँ इसलिए एग्जाम्पल लिया माता गंगा को, right? So we can understand such a important verse it is, right? और भक्ति रसामृत सुंदर में एक विशेष श्लोक है, ईहा, ईहा नहीं है, याद रखिए, ईहा दोनों दीर्घ है। ईहा यस्य हरे दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निकलास वपि, कैसे बोलना है, निकलास, जन्म सॉरी जीवन मुक्त सयुच्यते, a person acting in the service of Krishna with his body, mind, everything. ऐसे और एक श्लोक है, तीनों उपयोग करना है, कौन बता रहा है? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जाने वाक्यस्मिता। ओके, हाँ हाँ बोलिए। कुछ भूल गया। जीवे तेजो मुक्ति प्रदेश दया। ये पूरा नहीं बताया, आप लोग ज्वाइन किया वो भी ठीक नहीं है, पूरा श्लोक कोई बता सकते तो बता। हाँ, मतलब वाक वपु और नहीं, वेट, वो नहीं है श्लोक में, क्या बताया, हृद्वाक वपुर्वीर। हाँ पढ़ो पढ़ो, एक मिनट बाद। हाँ, तत्तेन तंबां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानयेवात्मकृतं विपाकं कृत्वा विददान्नमस्ते जीवे दयो मुक्तिपदे सदायमा। तो अनुवाद में क्या बता रहा है? My dear Lord, one who earnestly awaits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words, body. Hrid means hriday, वाक वपु, तीन, राइट। और एक जगह पे तीनों आता है, वो कौन सा श्लोक है जो हम अभी तात्पर्य में देखा था? प्रभु आज का तात्पर्य में जा तुरंत, ठीक। जो भक्ति रसामृत सिंधु में जो बताया वो विषय के बारे में और एक श्लोक है भागवतम में। क्या क्या लिखा है? बॉडी माइंड वर्ड्स। नहीं, हरे कृष्णा। हाँ, ये वही बोल रहे ना, कायेन वाचा मनसेंद्रिय, वो नहीं है। ध्यान पूर्वक सुनो, दिस इज द प्रॉब्लम, यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में क्या बताता है? बॉडी माइंड वर्ड्स, मतलब क्या है? वपु, मन और वाक। इसके बारे में एक श्लोक में बताता है। मनसो वेगो। ओके, आप लोग को बहुत समय ले लिया, मैं अभी समय बोलता हूँ। अभी तो क्लू नहीं देगा, हो गया इतना क्लू देखे, 10 मिनट ले लिया आप लोग पूरा। ओके, मानसो वपुषो वाचो, बस इतना ही कह सकते।
वाचो वेगम मनसा। श्लोक आधा श्लोक बता दिया मैंने अभी। वो नहीं है प्रभु, थोड़ा सुनकर मैं शब्द भी बोल दिया और श्लोक में आधा श्लोक भी आ गया उसके अंदर। मानसो वपुषो वाचो, अभी भी नहीं आ रहा है। जानंत एव जानंतो, हाँ अब्बा इतना समय लग गया ब्रह्मा का। 10, 14, 42 I forgot that number maybe 10, 14, 38 जानंत एव जानन्तु किं भुक्त्या नमे बहु प्रभु इसको 2 इडली कम करो, उसको तो गलती किया। हाँ ठीक से पढ़ो। हरे कृष्ण, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। जानन्त एव जानन्तो किं बहुत्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः। वैभवम, भगवान का वैभव को ये तीनों से करना संभव ही नहीं है। कौन बता रहे? ब्रह्मा जी। ये श्लोक में वही बता रहे, राइट। अगर कोई किया होगा तो उनको क्या कहता है? आध्यात्मिक। उनको क्या कहता है? गुरु बोलते हैं। उनको मृत्यु नहीं है। वो कहाँ जा रहा है? समाधि में जा रहा है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखता है? उनको कभी भी उनका शरीर को दहन नहीं होता। हाँ हाँ, वो बताओ। अहम हरिता पादेक मूले दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपते गुणास्मि हृदय बात करो। तीनों आ गया? किधर किधर बताओ। नहीं आएगा। Oh my Lord, may I again become their servant, so that my mind may always think of your transcendental attributes, my words always glorify those attributes, and my body always engage in the loving service of the Lordship. और एक बार बोलो, श्लोक को देखना। ट्रांसलेशन है, शब्दार्थ में भी एक बार चेक कर लो। Because sometimes what happens, no, that shloka will be word by word, where if you see it, you will not get the translation. There will be some addition by Prabhupada. 6, 11, 20. ये by heart नहीं आपको? हाँ, all the 3. No. क्या हुआ? किधर आ गया इतना समय के बाद? हरे कृष्ण। अहम हरे तब पादैक मूल, यही नहीं है प्रभु। मनः स्मरेत असुपतेत गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोत कायः। करोत कायः बोलेगा तो प्रॉपर, उसलिए वहां ऐड कर दिया बॉडी को। समझ में आता ना? श्लोक में नहीं है। श्लोक में बॉडी आता है क्या? शब्द 1 मिनट। कायः क्या लिखा है? शरीर लिखा है। शरीर लिखा है। माय बॉडी। गुड। Extra point. Hare Krishna. Okay, let's move on to that, Prabhu. Let's move first. Okay, I'll tell you, be relish with slokas, मगर हर एक भक्त इसको नोट लिख के रखेगा तो आपका आगे भलाई होगा इसका। ठीक है? So moving on to the next sloka. Start. You don't wait for me. Start. Okay. Synonyms by Srila Prabhupada. Tasmat, therefore, Bhadre, my dear sister, all auspiciousness unto you. Swatanayam,
for your own sons, Maya, by me, Vyapaditan, unfortunately killed. Api, although Ma Anushocha, do not be aggrieved. Yataha, because Sarvaha, everyone, Swakritam, the fruitive results of one's own deeds. Vindate, suffers or enjoys. Avashaha, under the control of providence. Hare Krishna. Tanuja Mataji. Hare Krishna. Okay. Simi Mataji. Translation. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. My dear sister Devaki, all good fortune unto you. Everyone suffers and enjoys the results of his own work under the control of providence. Therefore, although your sons have unfortunately been killed by me, please do not lament for them. Hare Krishna. Hare Krishna. इतना आसानी से बोल दिया. So we have to understand all these श्लोकास जितना भी पढ़ा हम लोग आज भी 4-5 श्लोक पूरा किसका उपदेश है? मूर्ख ऐड करना पहले मूर्ख कंस. Okay, so it's a very interesting thing. Let us go to the purport. Subhash. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, as stated in the Brahma Samhita. हाँ क्या हुआ? 5.54. यस्विन्द्र गोपम अथवेन्द्र महोस्वकर्मा ये हाँ देख के बढ़ता है, किसी को आंख ऊपर नहीं जाता है. Hare Krishna. Okay, continue. Everyone beginning from the small insect known as Indra Gopa up to Indra, the king of the heavenly planets, is obliged to undergo the results of his fruitive activities. We may superficially see that one is suffering or enjoying because of some external causes, but the real cause is one's fruitive activities. Even when someone kills someone else, it is to be understood that the person who was killed met the fruitive results of his own work, and that the man who killed him acted as the agent of material nature. Thus Kamsa begged Devaki's pardon by analyzing the matter deeply. He was not the cause of the death of the Devaki's sons. Rather, this was their own destiny. Under the circumstances, Devaki should excuse Kamsa and forget his past deeds without lamentation. Kamsa admitted his own fault, but whatever he had done was under the control of Providence. Kamsa might have been the immediate cause for the death of Devaki's sons, but the remote cause was their past deeds. This was an actual fact. Hare Krishna. So यहाँ प्रभुपाद कौन सा शूज में बैठा हुआ अभी? कंस का शूज में. क्यों? कंस अभी सिद्धांत समझाता है, राइट? वहाँ क्या करना पड़ता है? I'll tell you. When we write something, we have to get into the shoes. English में बोलते हैं ना. So Prabhupada, he is not talking the great qualities, or he is not talking about the bad qualities. Here he talks as if what Kamsa was thinking is explained in this. समझ में आता ना? यहाँ प्रभुपाद कंस का जो बुरा गुण है उसके बारे में नहीं समझाता है, और उसका अंदर जो विशेष गुण है वो भी समझाता नहीं. उन्होंने जो बताया उसको विस्तार करके बताते हैं. उन्होंने जो न्याय बता रहे उसके बारे में बताते. उन्होंने क्या न्याय बता रहे? ये तो मैंने किया नहीं, विधि विधान का है. देखो ऐसे आजकल बहुत लोग करके क्या डालते हैं, ऊपर को फेंकते हैं, राइट ना? दे डू मिस्टेक्स. हाँ मैं गलती किया, कभी किया, कभी भी नहीं किया, बोलते नहीं बोलते. So we have to understand. So here also he does the same thing. That's why when he writes a purport in his pattern, Prabhupada is giving the purport. What does he say now? So जितना भी हुआ है ये पूरा विधि का विधान है, मैंने किया नहीं है, मगर आपको तो इतना दुख पहुंचा दिया. I feel bad for it. कम से कम उनका अंदर थोड़ा सा
ये पत्थर का अंदर थोड़ा सा गीला होता है, मालूम, बहुत बड़ा पहाड़ होगा, राइट, उसमें वृक्ष भी कुछ भी नहीं होगा, खाली पत्थर है, ऐसी पहाड़ भी है, देखा हो ना, उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी होता है. So this is the way, though he is such a cruel person, there is a small dot of water, right? Okay, so now it's time for 2-3 minutes kirtan. This will be done by Aniruddha. Start whatever the tune. Make it 2-3 minutes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Krishna, Krishna Hare Hare,
हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद। हम लोग अनेक वायरस सुना हुआ, मगर ये वायरस तो एकदम स्ट्रॉन्ग है, हर एक सेल के अंदर जाता है, छोड़ता नहीं। सो हरे कृष्णा, दैट्स अ अमेजिंग थिंग, नाइस। श्लोका संख्या गीता स्टार्ट। Where are you? यावद्दतोऽस्मि Okay, so to read it, Praveen. As long as. हिंदी दे दो ना। यावत जब तक, अतः अस्मि दूसरों द्वारा मारा जा रहा हूँ, अंत अस्मि अन्यों का मारने वाला हूँ। इति इस प्रकार आत्मनम अपने को, मन्यते मानता है, अस्वकम जो अपने आप को नहीं देखता है, देहात्म बुद्धि के अंधेरे के कारण, तावत तब तक, तब अभिमानी अपने को मारा गया या मारने वाला मानते हुए, अन्य मूर्ख व्यक्ति बाध्य बाध्यता कुछ उत्तरदायित्व लेने के लिए बाध्य सांसारिक व्यवहार याद रहता है। हरे कृष्णा। अनुवाद ललन प्रभु जोर से। देहा बुद्धि होने पर आत्म साक्षात के अभाव से मनुष्य यह सोचकर अंधेरे में रहता है कि मुझे मारा जा रहा है, अथवा मैंने अपने शत्रुओं को मार डाला है। जब तक मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपने को मारने वाला या मारा गया सोचता है, तब तक वह भौतिक बंधनों में रहता है और उसे सुख दुख भोगना पड़ता है। हरे कृष्णा। केशव भारती। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्री भगवान की कृपा से कंस को हार्दिक खेद की अनुभूति हुई कि उसने व्यर्थ ही देवकी तथा वसुदेव जैसे वैष्णवों को सताया और इस तरह वह ज्ञान की दिव्य अवस्था को प्राप्त हुआ। कंस ने कहा, क्योंकि मुझे ज्ञान हो चुका है कि मैंने तुम दोनों के पुत्रों को मारने वाला हत्यारा नहीं हूँ, अतः मैं उनकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। जब तक मैं यह सोचता रहा कि मैं तुम्हारे पुत्रों द्वारा मारा जाऊंगा, तब तक मैं अज्ञान में था, किंतु अब मैं देहात्म बुद्धि जनित इस अज्ञान से मुक्त हूँ। भगवत गीता 18.17 कोर्ट में जाके ऐसे बताएगा ना। हाँ। अगर ऐसे ही होता है आजकल, जो हत्या कर रहे उसको छोड़ देते हैं। हमारा कानून एकदम बेकार है, क्योंकि मनुस्मृति में क्या लिखा है, जिन्होंने और एक व्यक्ति का आंख को निकाल दिया तो वो व्यक्ति को आंख निकाल दो। an eye for an eye and a tooth for a tooth। सुना हुआ राइट? इंग्लिश में हमेशा बोलता है, मनुस्मृति में बताया, मनु ने जो कानून बनाया,
an eye for an eye and a tooth for a tooth. अब किसी को दांत को निकाल दिया तो तुम्हारा दांत निकाल दिया, तोड़ेगा तो वही है, तोड़ेगा तो ही है। हरे कृष्णा। हाँ, हो गया। यस्य नहं कृतो भवो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा पि स इमल लोकन न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि उलझी हुई नहीं है, वह इस जगत का वध करते हुए भी हत्यारा नहीं है, न ही वह अपने कर्मों से बंधा है। इस स्वयं सिद्ध सत्य के अनुसार कंस ने याचना की कि वह देवकी तथा वसुदेव के पुत्र का वध करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसने कहा, कृपया ऐसे मिथ्या बाह्य कार्यों के लिए मुझे क्षमा करे और इस ज्ञान से शांत हो। हरे कृष्ण। अच्छा, और एक श्लोक हम लोग पढ़ा था आज सुबह गीता क्लास में, माता जी याद आता है? हाँ हाँ, नंबर याद है? 2.19, राइट? हाँ, यश्चैनं यायेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं। देखे पढ़ने में समर्थ है हमारा प्रभु। गुड, हरे कृष्णा। वो भी सामने बिल्कुल रखे। कृष्णा। अच्छा, अनुवाद पढ़ो। Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। Neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it slain is in knowledge. For the self slays not, nor is slain. हाँ, हिंदी किसके पास है? 219 तुरंत हिंदी भगवद गीता 2.19 फास्ट। इतना टाइम है हिंदी दे क्विक। आ गया। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। Another good reference for this. ठीक है, हरे कृष्णा। Moving ahead, next श्लोक। क्षमध्वं मम दौरात्म्यं साधवो दीनवत्सलाः इत्युक्ता आश्रु मुख पादौ शाला स्वसरोर अताग्रहीत। ओके, सुबंधु। क्षमध्वम, क्षमध्वम, क्षमा कीजिए ना, वही शब्द है। हाँ, क्षम्यताम। Both of you are great saintly persons, Dina Vatsala, and are very kind to poor, crippled-minded persons. Saying this, Asru Mukha, his face full of tears, Pada the feet. Shyala, his brother-in-law, comes up. हम लोग शाला बना दिया, संस्कृत में क्या? शाला पढ़ेगा तो श्यालाः संबंधनस्थिताः, भगवद गीता में श्लोक आता है ना, हम लोग उसको साला साला बोल दिया। हाँ, श्याला। हाँ, हो गया, डन। Okay, Anirudh father, read the translation. Hare Krishna Prabhu. Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Kamsa begged. One minute. Oh, okay. There's another Aniruddha here. Now I'll say Giri. Kamsa begged, my dear sister and brother-in-law, please be merciful to such a poor-hearted person as me. Since both of you are saintly persons, please excuse my atrocities. Having said this, Kamsa fell at the feet of Vasudeva and Devaki, his eyes full of tears of regret. Hare Krishna. So now purport by Venugopal. Venugopal.
Prabhu, he's not there. He's in office. And you do it then. Prabhu, Anirudh will do. Okay, bro. Hare Krishna. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Although Kamsa had spoken very nicely on the subject of real knowledge, his past deeds were abominable and atrocious, and therefore he further begged forgiveness from his sister and brother-in-law by falling at their feet and admitting that he was a most sinful person. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. So the important aspect of this, repenting. क्या बोलते हैं? Right? Realizing, repenting, and finding the next level. Hare Krishna. हरि बोल. एक तो गलती किया है, हम लोग अनुभव किया है, राइट? हम लोग क्या मांग रहे? क्षमा मांग रहे, एंड आगे रिपेंटिंग, आगे क्या है उसके आगे? रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन, सुधार करना, रेक्टिफाई. प्रायश्चित. क्या बोलते हैं? प्रायश्चित, राइट? प्रायश्चित के बारे में एक विशेष श्लोक है, किसी को याद आता है? भागवतम में वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है 614. प्रायश्चित्तानि 614, I think. Take it out. कौन सा कुंजर है? अभी सबको See, I'll tell you, the moment you read the shloka, you should straight away hit that. क्योंकि हमारा सुंदर पिछे जो बना है वो स्लो है, उससे बढ़कर हम फास्ट हैं. क्या किया आपने? आपको ऊपर डाल दिया. अच्छा. Did you get it? Let us not waste the time, please. Subhash, help him now. 614. It's my memory, may be wrong. Huh? It's not coming. You go further. प्रायश्चित्तानि. हमारा ट्यूसडे क्लास में बहुत बार पढ़ता था, 4-5 श्लोक है उसका कनेक्शन. ठीक. 613 होगा. Okay. 618. Got it. प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परान्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुंभम इवापघाः. अनुवाद. इससे कुंजर है. My dear king, as a pot containing liquor cannot be purified even if washed with waters of many rivers. Non-devotees cannot be purified by process of atonement even if they perform them very well. एक मटकी के अंदर भरा हुआ है पूरा क्या है? मद्यपान. उसका जितना भी साफ करो वो शुद्ध नहीं होता है. जैसी एक अभक्त जितना भी अभ्यास करेगा तो भी उनका क्या होता है? उसमें से पवित्रता नहीं होता. नॉन डिवोटी लिख दिया, राइट? इसमें मन्य कुंजर. क्वचित् निवर्तते अभद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम् अथो अपार्थं मन्ये कुंजर शौचवत्. I'll tell you why I took these shlokas. प्रायश्चित करने के बाद वापस वही करेगा तो कैसे होता है? एक हाथी स्नान वान करके वापस. मन्यः कुंजर. This shloka is mentioned again by Prahlad Maharaj in the 7th canto also. Hare Krishna. कोई सब्जेक्ट आप नोट करके लिख लीजिए, then you will always forget otherwise. So these are the things wherein how the mistake we do and again we repeat it. हम लोग कुछ गलतियां क्या है? प्रायश्चित. ऐसी कंस ने माफी मांग रहे और क्या आगे करेगा? वही वापस करेगा. फिर क्या फायदा नहीं. प्रायश्चित का अर्थ नहीं है. So the process is very simple. Realizing and repenting and finally asking for atonement. Clear? Right. Okay, moving on to next shloka. मोचयामास निरधात् श्रद्धः कन्यकागिरा देवकीं वसुदेवं च दर्शयामात्मगौरवम्. Hema.
हेम आपका नाम है ना? दीक्षा ना भी हुई है ना? अच्छा भूल गया, सॉरी, वो पुराना नाम बोल दिया मैंने। हाँ कंस ने उन्हें मुक्त कर दिया बिगड़ा लोहे की जंजीरों से, विश्व पर पूर्ण विश्वास के साथ कन्यक का गिरा देवी दुर्गा की वाणी में देव की अपनी बहन देवकी के प्रति वासुदेव तथा वासुदेव को वासुदेव को दर्शयान प्रदर्शित करते हुए आत्म सौहृदय आत्मनीयता। ओके, राधा कुंड। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। देवी दुर्गा की वाणी में पूरी तरह विश्वास करते हुए कंस ने देवकी तथा वसुदेव को तुरंत ही लोहे की श्रृंखलाओं से मुक्त करते हुए पारिवारिक स्नेह का प्रदर्शन किया। Immediately release them from the shackles. मगर मतलब क्या है? फिर भी कारागृह में रहना है। ये निकाल दिया होगा तो बाहर नहीं छोड़ा उनको, उधर ही रखा था। फिर भगवान आके कंस को मारा है, फिर उनको निकाला। Right? So we have to understand. Angita, next. शांत रोषा च देवकी यशशत् वसुदेवश्च प्रहस्य तम् उवाचः। Gaura Sundar, synonyms translation. Towards the brother Kamsa Samanutaptasya. Because of his being regretful. Shanta Rosha. Rosha was relieved of anger. Cha also Devaki, Krishna's mother. Devaki Vyasraja gave up Vasudevaha. The Vasudeva also Rahasya smiling come unto Kamsa Uvacha said in the past. Translation. Continue. When Devaki saw her brother actually repentant while explaining or ordained events, she was relieved of all anger. Similarly, Vasudeva was also free from anger. Smiling, he spoke to Kamsa as follows. Hare Krishna. Vidyagati, translation. Sorry, purport. Devaki and Vasudeva, both highly elevated personalities, accepted the truth presented by Kamsa that everything is ordained by providence. According to the prophecy, Kamsa would be killed by the eighth child of Devaki. Therefore, Vasudeva and Devaki saw that behind all this incident was a great plan devised by the Supreme Personality of Godhead. Because the Lord had already taken birth, just like human child, and was in the safe custody of Yashoda, everything was happening according to plan. And there was no need to continue their ill feeling toward Kamsa. Thus they accepted Kamsa's words. देखिए, शुद्ध भक्त होगा तो क्या करता है? ऐसे असुर लोग कुछ क्षमा मांगेगा तो उसको क्षमा करके छोड़ देता है। आके भागे, दूसरा क्या होएगा? ओ रिवेंज लेगा, बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं। राइट? सो दिस इज द ग्रेट क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। अगेन एक शब्द प्रभुपाद यहाँ यूज कर रहे, इसका कैसे मानेगा? वास इन द सेफ कस्टडी ऑफ यशोदा। क्यों? नंद बाबा क्या हुआ? है ही नहीं उधर। क्या लिखा है तात्पर्य में? देखो ना क्या लिखता है? हाँ, why Yashoda is given? Why not Nand Baba? Tell me. Because of two reasons. One is children were more dear to her. So when Kamsa is telling that I have cut your children or killed your child, so more painful. That's what pacifying. Okay. No, but what is written here? The human child was in the safe custody of Yashoda.
Why it is written? Why not Nanda? यशोदा नंदा ना, दोनों का नाम आना चाहिए ना. सब लोग देखा ना, तात्पर्य में देखो प्रभुपाद क्या लिखते हैं? सुरक्षा. किसका सुरक्षा में? यशोदा का सुरक्षा में लिखा है. राइट? क्यों नंद बाबा का नाम नहीं आया? हाँ बोलिए. इसके लिए वो फिर मालूम नहीं चलता है किसके पास. हाँ, वेरी नाइस. यशोदा का मालूम नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है. इसलिए क्या करती है उन्होंने? हमेशा उनको सुरक्षा देती रहती है. कैसे? एक गाय का पूंछों से गोमूत्र लगाती है. किसकी वजह से? पूतना का वजह से. So this is the way, the affinity. उसको क्या कहता है? वात्सल्य भाव. इसलिए महत्व क्या है? यहाँ यशोदा का महत्व बढ़ता है. नंद बाबा तो है, नंद बाबा को मालूम है ये स्वयं भगवान है. So this is the way Prabhupada completes this purport. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ओके, सब लोग मिलकर नमस्ते नरसिम्हा गाइए. अभी गौरव सुंदर, come. Take one Achaman quickly, do it and do the arti. Prabhu, how much it? Parvala. Achaman, do Achaman and do it. हाँ, शुरू कीजिए आप लोग. नमस्ते हेलो क्या है फोन? हरे कृष्णा. श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान महाराज की जय. हरे कृष्णा. आज का यजमान श्रीमान शंकरदारी दास, गोविंदेश्वरी लक्ष्मी देवी दासी, पुत्र सुपुत्र गौर सुंदर करुणदास, उनका धर्म पत्नी अनादि लक्ष्मी प्रिया और शंकरदारी गोविंदेश्वरी का धर्मपुत्री गिरिराज माधवी देवीदासी. यह पूरा कुटुंब आध्यात्मिक में आगे बढ़ने के लिए और संतान सौभाग्य और सुंदर के लिए भी प्रार्थना जरूरी है. और इसके अलावा हम सब लोग भक्ति में आगे बढ़ने का है. श्लोक बराबर याद रहना चाहिए, इतना ढूंढने का नहीं है, ठीक से याद रखना चाहिए. इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे 2 बार हरे कृष्ण महामंत्र. हरे कृष्णा हरे 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 राम आरती प्रभु आरती. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय.
Srila Prabhupada. Hare Krishna. Tomorrow's Bhagavatam will be in Shriman Rajendra Ramchandani और उनका धर्म पत्नी गोविंद संगिनी देवी दासी और उनका सुपुत्र राहुल रामचंदानी। उनका घर पे, उनका घर तो दुबई वा बिल्डिंग बैंक ऑफ बड़ौदा का बाजू में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। नियर बाय